यस लिटरली गॉड। बिल्कुल आंखों में वो तो ऑब्वियसली वेरी है वो। हम इधर रुके वो न्यूलेट अपना पिचकारी मारे जा रहे हैं। मेरे पास आए मैं गोल्डन प्रूफ दिया भाई। ओ भाई मेरे को एक गोल्डन प्रूफ का फेदर मिला HP % और डबल स्क्रीन के साथ। नक्स पुदीना पीस है अच्छा है। पुदीना गोल्डन प्रूफ दिया भाई। ओ भाई मेरे को एक गोल्डन प्रूफ का फेदर मिला HP % आवाज आ गई लेकिन लाइव चली गई ना, क्या करूं मैं। नहीं प्लीज प्लीज नहीं, एक एको इफेक्ट नहीं प्लीज, एक एको इफेक्ट नहीं भाई, ये गंदा है भाई बहुत। वो ना मेरे को पसंद आएगा ना मैं सह पाऊंगा। Who says you have to use scissors to तो cut क्या करते थे हम planks? लोग? Leave those rigid rules behind. I much prefer using my own cutting tools. हाँ ठीक है भाई वापस आ गया। कौन आया? ऐसे कैसे भूल जाता है तू कौन गया कौन आया? मैं देखा नहीं ना सभी। शॉर्ट बॉय और तू दोनों चुप बैठे हो, मैं और अकमल बात कर रहे हैं इसके लिए मैं पूछा। बातू नहीं लोगों ना क्या है ना कि बोलो हम लोग फालतू बात करते नहीं भाई। तेरे पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, किधर तेरा फोन? बात करने के लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी। देख अभी मैं क्लिक बिट एक करता हूँ, शिलोनेन पुल के आगे ना क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ओए ओए स्कैम कर रहा है, वोट मारेंगे भी बस। मारने दो साल लोग, क्या कर लोगे। अभी लिख लेता हूँ भाई उसके बाद करते हैं। तो पुलिंग अल्ट चार्जिंग और शिलोनेन with a question mark. आ जाओ या कमल। वो लीव कर दे रहा It's up to me to decide who I want to be and to cut my own path. अरे वैसे ज्यादा तो नहीं आ रही ना बैकग्राउंड में इस कैरेक्टर्स की आवाज गेम के, आई मीन। देख लो देख लो देख लो, आया क्या कमल? लगा दिया है भाई टाइटल पे, ठीक है। नहीं अभी तो नहीं आया। पुलिंग फॉर शिलोनेन, हाँ बहुत सही है टाइटल। अभी देखो भाई पैसा ही पैसा होगा। हो गया क्या कमल? नीला आसमां थोड़ी ना है जो सो जाएगा, हो भी सकता है। हाँ तो क्या कर रहे थे भाई हम? Give up! Everybody stand back! Lola, get them! Your life is mine. I am the cutting edge of क्या क्या fashion. क्या हुआ? Let's go, Tomato. अबे मतलब खड़े खड़े सो सकता है क्या एक बार? लगता है तुम लोग को अकमल? Fire! You're toast! Submit. ये उठा हुआ है भाई, उठा हुआ है। Drop this color. Scatter. Next customer. मार रहा हूँ बस, थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ, पता नहीं चलेगा तेरे को भी। Let's light it up. Lola, get them! भाई बैनेट इतना छोटा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। Teamwork is बैनेट dreamwork. खत्म है भाई, तेरी जिंदगी खत्म है इस पॉइंट पे। जा अभी अभी जा निकल। अभी निकल भाई सारे।
डिसाइड कर ले भाई, जाने बोल रहा है कि रुकने बोल रहा है। उसकी मर्जी है। मर्जी से कुछ चल नहीं रहा है ना आजकल। मैं नहीं जा रहा, मम्मी की प्रॉपर्टी डोर के बाहर खड़ी है, उसको सुनाने के लिए बोला। वाह, अरे वाह, स्कैम कर रहे हैं मोटा अपनी मम्मी के साथ। सही है भाई। स्कैम ओपी। जियो कैरेक्टर के लिए ही सही है भाई, मतलब ये तो। मेरे को बस अभी पायरो डैमेज बोनस को अपडेट चाहिए बस, बाकी तो गामी के आर्टिफिक्स हो गए, चारों ओर भी हंटर हो गए। म्यूजिक कम करता हूँ आज, म्यूजिक का जरूरत नहीं ज्यादा। अभी भी ज्यादा ही लग रहा है, ये कैसा म्यूजिक है ये? अच्छा सॉरी सॉरी, कब से सोच रहा हूँ क्या कम कर रहा हूँ मैं ये। अभी तो सही आ रही है वॉइस। हाँ वो मतलब मेरे ब्लूटूथ से कुछ हुआ होगा, मतलब माइक तो बंद था लेकिन इंटरनल क्यों नहीं आ रही थी पता नहीं। नसूमा वर्ल्ड लीव कर दिया था। अकमल को और काम करना। दक्ष क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? तुमको लगता है मैं चला जाऊंगा? अच्छा सो जाएगा। क्या बोल रहा है? देखा देखा। ले आओ भाई डेनो। तो निकाल रहे अपना नईरा निकाल। बस ये मारेगा। अरे कच्ची। अरे साले। बस मम्मी है। Wind strider. Rain cutter. As one with wind and cloud. I'm going in. कहाँ गया? अबे साले टेलीपोर्टर तेरी ऐसी की तैसी। Overruled. थोड़ा सा बचा, हो जाएगा ये भी। गॉबलेट में नहीं है भाई। वाओ
कॉल है। बाहर निकल बाहर निकल। मेरे फोन में पूरा तेज लगी कि मैं खाना भी खा रहा हूँ। मेरे भूख लग गया। क्या डोमिनेट कर दे। पूरा वही हो गया। फोन वाला कि जितना गर्म है प्लास्टिक में लगाया हूँ। फोन में 14% है। गर्म है बैटरी। हेलो की जान करने वाली है हमारे। देखा टेंशन नहीं डालेगा फिर। ये डीमन गॉड के सिग्नेचर का क्या मतलब है? क्ली गेटिंग टच्ड टुनाइट, अरे भगवान। कोई कोई वो नहीं क्या हो गया ना नहीं नाइदा किसी के पास है ही नहीं तो बोलो मुझे ट्राई करो। 56 लाख की शेयर है मेरे पास। भाई शेयर नहीं है। Barrett. एक सेकंड। My parents lost the 50-50 when they got me. भाई यार। चलना है 1 मिनट तो लगेगा खत्म करने में। इसलिए भी तेरे को ये टाइम बताने को नहीं। Alright, I finally got him. Hey there, care to join me on this fine day, okay? Midman. Magnar bhai, men are brave. And of course. Sorry. Good luck with your polls. Let's spot around my world. क्या दिखेगा आज? How simply better. ठीक है. When life sucks. ठीक है. Any move is complete facial best DPS. Mothering waves is better than Genshin. अच्छा ये तू है क्या सच? ठीक है. ठीक है. Always be cool and enjoy your life. I can meep. Okay. Wanderer rerun when अच्छा Wanderer rerun का रिप्लाई दे दूं क्या मैं कब होने वाला है? छोड़ो नहीं रहने दो. 5.4 switch it up to Brio. Okay. Oh yeah. मार ली नाइदा। मैच पाकिस्तान जोंगली मेन नथिंग इज समथिंग। ठीक है। अब अपना नाम ही चेंज कर दो तुम लोग। ठीक है। व्हाट इज लव? ठीक है। अब फ्रॉम जापानिया लव है प्री तरह लव माय बुलेट्स। भाई क्या क्या ही है भाई, ये गेम पागल वागल है क्या? हाँ तो मैं क्या कर रहा था? अच्छा एक कंडेंस यूज कर चुका हूँ। अब बाकी के कंडेंस जुड़ा के आते हैं। मी अल्ट्रा सिम फॉर अर्ली नो रिग्रेट्स। वो तो समझ में भी आता है। वो भाई क्या बोलूं मैं? सही से नहीं कर पाया। काजुअल सही से नहीं यूज कर पाया। शिंचू की आउटफिट खरीदी है क्या? बात सही है, मेरे पास होनी तो चाहिए शिंचू की आउटफिट। अरे ये अगर है ना मेरे पास तो खरीदी तो नहीं है ऑब्वियसली। हो गया तेरा सब कंटेंट्स हो गया अकमल। यस हैप्पी बर्थडे शिंचू। पोस्ट हैप्पी बर्थडे जो भी। Time to act. करो मैं गेम Witness the power of robot. Rain outlines your ठीक है अभी याद आया, ये भी करना होता है। Fallen leaves, adorn my night. Wind strider. teamwork is dreamwork. इसको बोलते हैं अच्छे खासे रोटेशन की माँ बहन करना। This is where you fall. आजा तू, अभी कंडेंस बनाऊंगा वापस। Let me weave you a verse. Everybody stand back. Clouds high, the birds call.
एक सेकंड अभी वापस लीव कर रहा हूँ। लास्ट मान दिया सोलो। इवेंट में मिली थी, हाँ वो याद है मेरे को, इवेंट में मिली थी। खरीदा तो नहीं होगा। 30 FP और 60, अभी 30 में होगा। 60 में बहुत ज़्यादा हो रहा है। लास्ट वाले लैंटर्न राइट में मिली। अच्छा हाँ, लैंटर्न राइट में तो मिली थी शायद तक। ओके डिफेंस मैं नहीं निकालूंगा। xilonen क्यों निकालूं? मैं नहीं निकालूंगा। हीलिंग बोनस थैंक यू, मैं निकालूंगा पूरी, ना चिंता मत करो। तो ये वाले सेट क्यों पाम कर रहा है? कुछ नहीं करने को। अबे पार्ले वाला सेट पाम करना है, इसे स्ट्रॉन्ग बॉक्स कर लेगा। नहीं स्ट्रॉन्ग बॉक्स नहीं करूंगा मैं, अब डायरेक्ट पुरीना वाले सेट का करूंगा स्ट्रॉन्ग बॉक्स। तो सोच रहा था राइडन को थोड़ा ठीक ठाक कर लूं तब तक। अरे तो मुन्ना इससे अच्छा काजुआ को 4 पीस फार्म करना, काजुआ के लिए। मैं काजुआ का डोमेन खोलूंगा ही नहीं मैं जिंदगी में कभी। जिस दिन उसका डोमेन में ओपन कर दिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ मेरे लास्ट डे होगा गेम का। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है उसका डोमेन, मेरे को कुछ नहीं मिलता उसके डोमेन से। मेरा डिलो का फ्लावर देखो, मेरे को टाइम लगेगा उसमें आने में। ये गेम इंस्टेंटली नहीं रहता अल्टर। जब आएगा तब देख। शॉर्ट अपडेट हो जाता है सब कुछ। कनीज के आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहे हैं। कनीज सिर्फ हमारे पास मैग्ना भाई के पास है, हम लोगों में ना। मेरे को तो भाई वो लाने के लिए बहुत इजीली मिलते हैं आर्टिफैक्ट, पता नहीं कैसे अच्छे रोल भी हुए साथ। मेरे को पहले दिन में फ्लावर मिल गया था मोलाने के लिए। देखो फ्लावर मेरा फेदर है ना, उस पे 34 क्रिट डैमेज है, फ्लावर पे 20 है, गॉब्लिन पे 25 है, सर्कुलेट पे 10 क्रिट रेट है, नहीं सर्कुलेट पे क्रिट ठीक है। टैंक पे 10 क्रिट रेट है। 11 मतलब। चल बता शॉर्ट कितने देर में क्लियर कर लेंगे? वो स्ट्रॉन्ग बॉक्स नहीं ना 5 मिनट्स। हाँ वो जगह नहीं मिले ना, तो काजुआ का सेट स्ट्रॉन्ग बॉक्स कर ले। हो गया, एलेक्सर लगा के गॉबलेट बना लूंगा भाई मैं अच्छा खासा। भाई एलिक्सर काजुआ का इस पे वेस्ट मत कर, मैं तो बोलता हूँ। गॉबलेट तो बना सकता है, पर उसी जगह तू अगर वो रखे और अपने सही है, रेडी कर दे। पता है ना, ज्यादा बेटर होगा। बाजुआ ले ले In तू। this world I roam, I carry memories of my home. This ये है ना काजुआ पे। it is the है ना? last link I have to the land of my home. काजुआ पे ईएमए पर वीवी नहीं है ना। मैं तेरे को क्या करना है वीवी से? तू खाली सीड तोड़ दियो उसने। बाकी मैं देख। हाँ चिंता मत कर, तू करता हूँ मैं अभी ठीक करके देता हूँ, रुक। भाई इसका न्यूलेट सब देख लेगा, पूरी दुनिया को देख लेगा। 350 क्रिट डैमेज मजाक थोड़ी है। Overruled. Oh. वेपन है, भगवान भगवान है भगवान। Everlasting as the moon. अरे भाई मेरा ब्लड बॉन्ड लगाना था भाई, उसको मार दिया वो। नहीं तो कैन हाँ बोल। डोमेन हो जाए ना तेरा काम करके, तो एक बार देख रहा हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा क्या। ठीक है नहीं, लेकिन क्या सोच के इसको लॉक किया हूँ मैं? 3 क्रिट रेट है उसमें। भाई फिर भी अगर क्रिट रेट और अटैक रोल हुआ ना, तो किसी भी अटैक स्किलिंग कैरेक्टर को दे सकता है। जैसे कि फुरीना। बिल्कुल फुरीना को कम हरामजादा भाई। अटैक चाहिए। कैसा आदमी है भाई, देख रहा है।
तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, जब कोई कैरेक्टर ही नहीं है ऐसा तो क्या करूँ मैं। मेरे पास नहीं है, मेरे पास। ये मारना मत, रुक जा रुक जा। हाँ ये अब मार दे, मार दे, मार दे, ओए मार दे। ओ ये ऑलमोस्ट फुल। हाँ जिस पे एचपी पे स्केल करती है और तीनों डिफेंस पे स्केल करती है ना। क्यों? मैं एक बात बता, जिसके लिए मेरे पास पहले इतना अच्छा अच्छा है ये सब फ्लावर, उसके लिए क्यों जाऊं मैं? अरे तो इन फ्यूचर अगर कोई कैरेक्टर मिल गया तो उस पे दे सकते हैं। तो थोड़ा आगे का भी तो सोच, आगे की सोच। मेरे पास उससे अच्छे अच्छे फ्लावर है, ठीक है, तो मेरे को नहीं सोचने की जरूरत है। अभी तक 0 लेवल पे पड़ा है, बोल रहा है 0 लेवल के आर्टिफैक्ट को बोल रहा हूँ उससे अच्छे फ्लावर है। मेरे को क्या पता वो बाकी पूरा डिफेंस देगा, वो तेरे को नहीं पता वो कैसे। भाई मेरे पास डबल क्रिट वैल्यू वाले हैं भाई। One with wind and cloud. Settle down. Take a moment to rest. अबे मरा नहीं। रोज यही बोल बोल के नजर लगाता है दक्ष, पता है? नजर नहीं लगाता हूँ सच में भाई, देख ले तेरे शॉर्ट्स पे व्यूज देख ले। किसके? तेरे तेरे व्यूज जो शॉर्ट्स डाले तूने 3-4। तू शॉर्ट बॉय के शॉर्ट के व्यू देख ले। भाई बंदे का नाम ही शॉर्ट बॉय है, उसका नाम ही शॉर्ट बॉय, उसको व्यूज आएंगे। भाई शॉर्ट बॉय नेक्स्ट कौन सी डाल रहा है शॉर्ट्स तू? तो एक काम करना, हाँ ठीक है, एक सुनना सुनना सुनना, एक शांत रहे दक्ष, एक सेकंड। मैं क्या बोलता हूँ, हर दूसरे दिन ना एक वो डाल दिया कर वीडियो शॉर्ट में। One with nature. तेरी मैया की जय। The birds come. मंगल रैप कर दूंगा, साले ज्यादा बात करेगा। Witness my rise. Transfix. Wind strata. शॉर्ट डाला था उसमें मैं जाके कमेंट्स पढ़ रहा, बंदे अपना अलग ही झगड़ा कर रहे हैं। कोई बोल रहा बेनेट बफ करते हैं, बोला नहीं, कोई बोल रहा नहीं करते। अबे ठीक है, बेनेट बफ करता है, लेकिन एक बात बता मेरे को कि मैं क्यों नहीं ओपन कर पा रहा हूँ इसका कमेंट सेक्शन? मेरे को बैन वैन दिया है क्या ये? डिफेंस अटैक, ओके। अबे तो मॉडरेटर है ना, तू कर सकता है। मैं मॉडरेटर हूँ, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों करने ही नहीं दे रहा है। ये भी है। अटैक बढ़ा के क्या ही कर लेगा। Shower me with praise. One with wind and cloud. अरे वाह भाई। भाई छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए शॉर्ट बॉय। हाँ देखो दक्ष क्या बोल रहा है भाई। दक्ष आप भी थी सुना रहा है अपनी। एक सेकंड। ठीक है, बेटर करता है, बेटर करता है भाई, पढ़े होगे तब समझ जाओगे। हाँ भाई तेरे को क्यों समझ में आता है? कितना बड़ा हो गया है शॉर्ट बॉय तुम। सॉरी वो थोड़ा सा वो
ईस्ट साइड से सॉरी। सोच मेरी बहुत बड़ी हो गई देखना। ऐसी क्या है मतलब तेरी सोच में, ऐसा क्या है भाई जो तेरी सोच बड़ी हो गई है? हाँ तेरे को देख मोस्टली डिफेंस आर्टिफैक्ट्स मिले अभी गेम भी बोल रहा है xilonen पुल कर तू साले। xilonen तो नहीं करूंगा भाई। चल रे चुट्टी तेरे को पता ऐसे ही खड़े रहे। ये अपना ही बोल रहा है कि वो आलकीनो पुल करके रिग्रेट करता है कि आलकीनो ऐसी है उसको रिग्रेट करता है आलकीनो पुल करता है। हाँ अकमल साले बिल्ड करने आता है, बिल्ड कर उसे एक बार सही से ढंग से बिल्ड कर। ग्लैडिएटर देके रखा है ना ये? ठीक है। जॉइन तब करेगा ना तो वो अबे लाइव में तुम लोग की आवाज अगर आ रही होगी तो तैयार रहना, क्योंकि मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता लेकिन के बारे में सुनने में, बाकी किसी को पड़े तो फुल पोटेंशियल नहीं निकाल पाता है। अच्छी बात है, नहीं जा रही होगी। 1 लाख का मार देगा, फाइट 1 लाख का मार देगी। 250 के आराम से कर देना, कोई खास वो भी नहीं था। भाई न्यूबलेट इतना डेड क्यों लिखता है यार मेरे को? एक दो बार ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो बार हर बार मारनी चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट बॉय पानी पी ले भाई, पानी पी ले प्लीज, शांत शांत। पहली बात मुझे आलकीनो पसंद नहीं है, मैं ऑब्वियसली एक नागला मेन हूँ तो मुझे आलकीनो नहीं पसंद, बट ये अकमल चुकी है इतना बोल सकता हूँ मैं। शॉर्ट तू चेंज कर रहा है काजुआ? छोड़ो यार, सबके अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, क्या बोलूं। अरे वाह वाह शॉर्ट बॉय वाह। ठीक है नहीं सही कहा यार, जो चीज इसके पास नहीं रहती ना उसको कदर नहीं रहती उस चीज की। नहीं ऐसा नहीं होता, जो चीज जिसके पास नहीं होती ना उसको उसकी कद्र होती है, ऐसा होता है। जो रहती है ना उसकी कदर नहीं होती। हाँ जो रहता है उसकी कद्र नहीं होती। मैं क्या बोला, मैं जो चीज इसके पास रहती है उसकी कदर नहीं। नहीं तू वो नहीं बोला लेकिन। तू उल्टा बोला। Clouds high. The birds call. Wind strike. अपना ओपिनियन अपने पर्सन पे रखो तुम। Allow me to intervene. बस तेरी ऐसी की तैसी। पर डैमेज फिर भी अच्छा देती है, तो वो तेरे को नहीं समझ आ रहा था घटिया इंसान है। अरे मत करो भाई, रहने दो। भाई कैरेक्टर अगर तू रिग्रेट करता है इसका मतलब ये कि वो ज्यादा डैमेज नहीं दे रही। अगर तू कैरेक्टर क्यों? नहीं कर पा रहा तो वो रीजन नहीं है रिग्रेट के लिए। भाई 8 कंडेंस यूज किया हूँ मैं, कुछ नहीं मिला मेरे को। अरे वो सर्कुलेट अच्छा है ना, अगर वो क्रिट रेट रोल हो गया तो अच्छा है। ऑन साइड एनर्जी और क्रिट डैमेज दोनों है, अच्छा रोल हो सकता है, ट्राई करो। अभी करके देखते हैं, आजा। करो लेवल 4 का करो, अगर क्रिट रेट रोल हुआ ना तो रखो, नहीं हुआ तो फिर नहीं मत करो आगे, मैं तो बोलता हूँ। का आउटफिट ले लो भाई, ये अंबानी की औलाद है भाई, ये नहीं ले सकता, मतलब अंबानी की औलाद नहीं है, नहीं ले सकता। सीक्रेट बुलाओ यार, ये फटे हुए कच्चे पे काम चलाता है। अरे अरे वाह सर वाह। इसको तुम बोल रहे हो डेलो कैसे बेकारी है ये। नहीं डिफेंस क्यों लेवल अप कर रहा है, तू पागल है क्या? वो गलत हो गया थोड़ा सा, दिखा नहीं था मेरे को। अरे बोल रहा है डिफेंस कहां है? भागवत में क्या है क्या? अबे 2 लेवल नहीं फर्क पड़ता भाई। मैं नहीं कर रहा भाई। अभी तक बंदा जो मैं डीलू का आउटफिट ले लो। अरे यार ठीक है। राइडन को उसका सर्कुलेट दे दे भाई, क्रिट रेट वाला सर्कुलेट दे दो उसको वापस, नहीं तो फिर भूल जाएगा बाद में। सुना राइडन यूज भी कहाँ करता मैं?
Water comes in many flavors to the सुन लिया discerning सर। palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has 60, an enduring 120. aftertaste. Staring In into my eyes is Inazuma, क्या the चेंज water किया हूँ मैं? possesses a अटैक, delicate flavor इलेक्ट्रो unlike डैमेज, any ठीक other. है। Sumeru's मेरे हिसाब से तो ठीक है, water मेरे को नहीं फर्क पड़ता। has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate अटैक, it. अटैक। अटैक क्यों दिया भाई? एनर्जी सैंड देना। 218 कम है। 218 इनफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी सैंड दे उसको। Melusines are beautiful creatures. They वो are चिंता मत कर, proud of 269 है वो। Be sure to befriend them. and अभी cause ER them कोई और no यूज कर रहा है ना, उसको क्यों दूंगा मैं? कौन यूज कर रहा है? शिंगचू यूज कर रहा होगा शायद तक, क्या पता। तो शिंगचू Yes. को क्यों दे रखा है भाई? शिंगचू को मत दे, राइडन को दे तू। क्या मैं राइडन यूज नहीं कर रहा हूँ ना दक्ष, क्या बात कर रहा है तू अभी? चिरोरी की बेस्ट क्या लगता छोड़ो रहने दो। है? पहली बात चिरोरी डीपीएस नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट। वही सब टीपीएस की पूछ रहा हूँ। 2 जियो रखो, बात खत्म, बाकी करते जाओ। मोनो क्या मैं चियोरी मेरे पास है, मैं उसके लिए सबसे बेस्ट ओपिनियन दे दे। मेरे से किसी ने पूछा, मुंह बंद रख। साला आगे की और एक हर लेकिन रिग्रेट कर रहा है। मॉनिटर खोलने का मन करता है, फिर याद आता है कि हाँ 23,000 का मॉनिटर। 23,000 का मॉनिटर है, पीसी से ज्यादा इसका मॉनिटर रेट है भाई, बताओ। Never mind. Let them do as they please. ये देख लो। बाय द वे मॉन्स्टर 100 कर दिया मैं, पता नहीं कैसे। वाह वाह, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट भाई मतलब ऑस्कर नहीं मिलता है इसके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, दे सकता है बाय द वे वो भी। मजे ले रहा हूं तेरे। तो मैं क्या ले रहा हूँ? बड़ा गलत साउंड कर रहा है, पर ठीक है। अरे यार ठीक है। थियोरी के लिए बेस्ट टीम मोनो जियो है। अगर पुरीना है तो पुरीना भी डाल सकते हो। गरीब। मोनो जियो ऐसा बनाना कि कोई मीम कोई जियो का ईटो आ गया, ये दोनों काम करेंगे। बोलने के सबसे बेस्ट रहेंगे लोकल और ईटो। भैया इज नॉट हाँ आ गया। बे जावे शॉट घूम के आ। जा घूम के आ एक बार। भाई उससे बट मोनो जियो बेटर बना। पुरीना क्यों घुसा रहे हो? एक और जियो कैरेक्टर ही घुसा दो। बोलने देगा तो रॉक जब ये मोनो जियो जो रहती है और 4 जियो कैरेक्टर में बेटर 3 जियो कैरेक्टर और 1 जियो वो बेटर रहेगा। Add सर as- यस सर। अकमल देख Thank you for पीसेस भेजिए। भाई वो तुम लोग के लिए नहीं है, सॉरी। उस बंदे ने लिखा है थैंक्स भाई, कीप इट अप, होप यू विल गेट अ पीसी एंड अचीव व्हाट यू वांट। ये देख वो लो। अकमल के लिए है। दुआ इसको फेंक Staring into my eyes is ill-advised. मैं ना ईयरफोन दोनों कान में लगा देता हूँ, मेरे को सुननी नहीं लोगों की आवाज। अंदर से दर्द दिया भाई, अंदर से दर्द दिया। अभी जस्ट तुरंत ही लाइव बंद किया था, आशुतोष का नीचे कमेंट आ जाता है। वाह आशुतोष, वेरी कंसिस्टेंट। मेरे लिए था ऑफ कोर्स पीसी बोला है। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, वो किसके लिए था वो चैट? तू सोच के बता। तेरे लिए होगा। हाँ फिर हाँ मुझे लगा था, मैं थोड़ा क्या confused क्या हुआ। भाई, कुछ नहीं। अरे हाँ वैसे शेवरस जो है उसका गेम प्ले कैसा वर्क करता है? चलो हो गए। गेम पे कैसा इसके मार के आगे मारना है बस। हाँ क्या स्पॉइलर चाहिए क्या किसी को? मारना, उसकी टीम में 2 ही एलिमेंट यूज कर सकते हैं, पायरो। नहीं यार नहीं करते, छोड़ो रहने दो।
बेचारे लोग रो देंगे। तो इसके पास है ना, अकमल के पास है ना उसकी टीम राइडन, सारा बेनेट और सेवरुस। मैं अगर 10 पुल किया तो xilonen निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ओवरलोडेड रिएक्शन करना पड़ेगा उसको। ओवरलोडेड पर उसको 40% रेज लो मिलता है, एवरेज 40%। लेकिन अगर डोरी और ये नहीं होते ना यहाँ पे कैंडल्स, तो मैं शायद मार भी देता। मैं 4 स्टार के लिए मुझे सारा सिस्टम होती तो मैं भी ओवरलोड राइडर। ठीक है, नहीं नहीं, एक चीज और मेरे को जानना है। यहाँ पे एक नेटलन की कैरेक्टर है, एक फॉन्टेन की कैरेक्टर है, तो इनाजुमा के सपोर्ट क्यों है यहाँ पे? वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सुमेरु की सपोर्ट, 2 सुमेरु, सॉरी तीनों सुमेरु के है ना तीनों। अरे भाई वाह, सही है। तीनों सुमेरु, एक सुमेरु डेजर्ट और 2 सुमेरु सिटी। ठीक है, सही है, बहुत सही। टेक्निकली तीनों सुमेरु। हाँ वही मतलब पहले छठा रीजन का एक कैरेक्टर, फिर 5वें रीजन का एक कैरेक्टर, और जो सपोर्ट है 4 स्टार वाले वो चौथे रीजन के। लो मजे करो, 4 लो 5 6 खिचड़ी खाओ अब। जो भी दे दिया बस संभाल लो। लिटरली ये तीनों वर्स्ट सपोर्ट है भाई इस बैनर के लिए। 2 जियो कैरेक्टर्स है और उनके लिए सपोर्ट क्या दिया, इलेक्ट्रो, हाइड्रो, टेंडो। देख अगर यहाँ पे वो देता ना, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। अबे जियो कैरेक्टर है ना एक, वो 4 स्टार, वो लीवे में जो वो करती है, वो पैरा। हाँ यूनजिन, वो देता तो मजा आ जाता। हाँ यूनजिन भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। C6 पर बहुत काम की है वो, आयाटो, साइनो ऐसे कैरेक्टर्स के साथ, जो कैरेक्टर्स अटैक स्पीड बेस्ड है। सेंस भी होना था। Things have been looking really rough for Natlan वो lately. बंदे ने 4 There में are लिखा more है and more 4 commissions स्टार, from फिर the आगे जोकर का Adventurers इमोजी Guild, लगा, and they're फिर all 5 related स्टार to में the फायर का Abyss. इमोजी। अबे अब थोड़ा तुम लोग धीरे बात करो, मेरे को Swinging स्टोरी में around फोकस won't do करने us दो। any good. Let's go and see if there's anything we can do to help. धीरे क्यों बात करो, तुम लोग एक को आवाज चीज ही है, कम कर मेरे को देता हूँ एक मैं। चीज बोल नहीं बोल, मैं वो नहीं रोक रहा हूँ मैं। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, अभी नहीडा का और हुडा का बैनर दे रहे हैं ना, तो सपोर्ट क्या होगा फिर उसके 4 स्टार वाले? उनके बैनर पे सपोर्ट में कावे है शायद, तक वो भी हो सकता है। कावे एक चीज है, इलेक्ट्रो और हाइड्रो सपोर्ट देना तो समझ आता है, क्योंकि नहीडा के साथ इलेक्ट्रो कैरेक्टर अच्छा है और हुडा के साथ हाइड्रो, वैसा करे तो ठीक है। चलो आर्कन क्वेस्ट में ग्लिच था सुबह, अभी देखा ठीक नहीं हुआ है। अरे ग्लिच नहीं है वो, ग्लिच नहीं है, ये ग्लिच नहीं है। वो ऐसा है कि कनीश और जो उसकी मतलब कचीना के वॉइस एक्टर्स थे ना, वो इंग्लिश वाले अवेलेबल नहीं थे वॉइस ओवर के लिए। अरे कुछ It was था। on a deserted moonlit night that the hero approached the vile स्ट्राइक पे dragon's नहीं थे, limited स्ट्राइक पे lair. नहीं थे, स्केड्यूल मैच नहीं किया था उन लोगों का। अरे पेमेंट इशू, मैं सही बता रहा हूँ, होयो से पेमेंट इशू होगा, तुमको लगता है? होयो है वो, होयो। मैं देखो सही बता रहा हूँ, स्केड्यूल मैच नहीं हुआ होगा, मिस मैच हुआ होगा, उसके कारण हुआ होगा। मतलब सबसे ज्यादा सेंस बनाता है ये चीज। has been overwhelmed these days. होयो से पेमेंट इशू ऐसे नहीं होता ना। चैट बदरी भाई एक यार, चैट भाई आ गए भाई। No worries at all. पूछ लो यार, पूछ We've लो। always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. अरे देखो, अरे C6 R1 xilonen अभी फ्लैक्स नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, ठीक है बाद में करूंगा। अभी क्या पूछ रहे हो फिर? क्या भाई यार। Hey, Catherine, it's us. Got any new commissions?
You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Okay. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. हाँ हाँ कर दिया क्यों? Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. तेरे को कौन बोला मैं आधे में बंद नहीं कर सकता क्या? Yes, precisely. स्पार्किंग भी लोग खेलोगे मैं खिला दूंगा क्या है क्या मतलब? Rather than running around and trying to tackle everything at once. नहीं एक एक्ट तो पूरा होगा भी नहीं लग रहा है इतनी देर में. So please also take a chance हाँ to गेम है मैं relax. समझ गया था कैसा गेम है वो बताओ ना मेरे को. चेक करके बताता हूँ स्पार्किंग जीरो ना. चेक कर रहा हूँ 2 मिनट को. Paimon knows that. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. वो ड्रैगन बॉल गेम है. हाँ ड्रैगन बॉल का एक गेम आ रहा है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो करके शायद. ओके फिर तो कर सकते हैं ट्राई. लगा लेता क्वेस्ट से निकलो मैं तुमको वीसी में दिखाता हूँ. अरे देख लिया देखो अभी. Once the disaster is over, everyone will return to their एक normal स्किप lives. जल्दी से बात यार मैं. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. ठीक है. बताओ खेलोगे? अरे मैं अभी नहीं बताऊंगा देखो बाद में बताऊंगा मैं चेक करके अच्छे से. Oh, hey, Katrina! Are you feeling better now? हाँ ना भाई वो भी तो है. देखते रुक. ये लगता नहीं मुझे मोबाइल के लिए होगा. सपना तो बंद करके बैठा है वही सपना हमारा. थोड़ी देर पहले तो सो के उठा था फिर से नींद आ रही है क्या? भाई स्टोरी मोड चालू करते ही हो जाता है. पीसी पे होता है बट मैं खिला सकता तुमको मोबाइल पे. चैट बाय प्रोग्रामर है क्या हमारे? Wow! So we'll finally get to meet xilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. क्लाउड से खेलने को बोल रहे हैं क्या? अच्छा केन मुझे एक बात समझ नहीं आई चैट भाई करते क्या इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? नहीं पता भाई. आ रही क्या करा मैंने करा ना कि ब्लूटूथ से लेके वॉइस और मेरा वॉइस जा रहा है मेरे हेडफोन पे थोड़ी सी अच्छी आवाज में. अच्छा वाला तेरी आवाज अच्छी भी आती है. She wouldn't turn me away, right? I mean, I hope she wouldn't. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. हाँ ज़्यादा हो गया ठीक है. ठीक है. हाँ मतलब क्लाउड पे खेलने वाले हम लोग. मेरे को तो वही लग रहा है. हो जाएगा चलो कोई दिक्कत नहीं है. क्या हुआ क्या तेरे को कूट रहे हैं क्या घर में? नहीं वाईफाई कल के पूरा दिन लाइट बंद होगी ना तो पता नहीं रात को भी होगी कि चालू. अच्छा ठीक है. वाईफाई नहीं चलेगा तो आओ कहाँ से? और मेरे घर पे भी
नेट का भी काम चालू है आज से नया पे सारी मुकेश अंबानी जी नेट कितना सस्ता कर मैं तो जियो का सिम Body and mind. तेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं शांति चाहिए मुझे बस डार्लिंग शांति तो नहीं मिलेगी। सुख शांति चाहिए मुझे और जो सुख शांति मुझे तब मिलेगी जब मुझे पीसी मिलेगा पीसी में मैं ठीक वो है। गेम खेल सकता हूँ जो मेरे को खेलना रहता है xilonen। मैं तेरा स्ट्रीम क्यों देख रहा हूँ मेरे को स्पॉइलर मिलेगा मैं नहीं देख रहा तेरा स्ट्रीम बट तो मत, मैं तो बोला था, मैं तो चालू करने से पहले सोच ही रहा था इन लोगों को बोल दूं क्या कि पूरा जाके क्वेस्ट करने वाला हूँ, बैठ जाओ भाग जाओ, ऐसे नहीं। यस स्ट्रीम लिंक मैं भी बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रहा, स्ट्रीम लिंक का प्रॉक्सी और नेटवर्क लिंक का भी टेस्ट करना था। तुम दिल्ली से दूर रहते हो कि तो टेस्ट सब हो जाएगा। ठीक है, रहता तो हूँ, दिल्ली से तो बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait, are you Outlanders? भाई ये एक्सप्रेशन यार। Yep, we're travelers who just arrived in Natland not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. ठीक है, दो अलग अलग चीज। No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where भाई एक बार ना true xilonen और difficulty माविका lies का now. इंटरेक्शन देखना है। No, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. xilonen कैसी सपोर्ट है अच्छी है कि हाँ वो अभी C6 फ्लेक्स करेंगे ना। एक काम करो, बुला लो डीसी में जाके देखो C6 फ्लेक्स, मजा आ जाएगा तुम लोगों Pyro को। Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Ziox की वीडियो देख के आया, Honestly, बताओ। it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. मैं भी उसी का वीडियो देख के पुल मारा मैं सोच रहा था पुल करूँ नहीं करूँ सुबह के 7:30 बजे मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात 7:30 बजे गेम खोला रुका उसका वीडियो देख रहा मैं बैठ के Anyway, I can't argue with her. By if the she way, isn't Ziox here, हमारे and टाइम it'd के be हिसाब से pointless 12 to बजे take my अपलोड कर anger देता out है। on someone else. क्या था क्या 12 बजे आती है उसकी वीडियो। Just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. आने के पहले उसने एक 7 घंटे It's impossible? जब मैं चालू किया ना तब देखा 7 घंटे पहले अपलोड किया था मतलब 12 बजे अपलोड किया होगा। As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and higher as generations of successors inherit it. उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो Ziox अर्ली एक्सेस में समझाता है ना भाई, क्या बोलेगा उसको, लोग खेल के समझा रहे हैं। We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. ओके, ये तो आसान है। पहली बात हाँ करते हैं, ठीक है। मैंने जो दूसरे बंदे की भी वीडियो देखा ना उसने बोला कि वो नागिन But they were all performed outside of Natlan, correct? बस और कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को ऐसी की तैसी। Yeah, that's right. मेरी टीम में अच्छी है मैं पुल कर रहा हूँ। भाई लूमिन का एक्सप्रेशन। Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. ठीक है। Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. रॉबिन का भाई भाई तुम माविका इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी?
the YF don't want just anyone to get a name, huh? Awika, of all people, should know better than anyone. Yet she still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Why do I feel like this happened before? I think last time children just ended running dozen of laps around the hills nearby. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. Okay. You mean you're already willing to accept the task? और क्या कर सकती है बॉस के What else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. Steam link डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से okay. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of our plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Okay. Yeah, let's see if we can find some special way to pull this off. If we really can't make it work, I'm sure we can still go about it firework on white. The key is getting the YAB to somehow acknowledge the traveler's existence and record. We heard the voice of a YF when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own YAB. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? टैब से भी कर सकते हो डिवाइस की स्पेक्स से फर्क नहीं पड़ता ना लेकिन मेरा टैब थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है ना वो लेनोवो का कौन सा है H60 क्या तो मॉडल है मेरे को नहीं पता मतलब गेमिंग के लिए तो नहीं है Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one YAB alone would probably not be enough. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. अरे गेमिंग के लिए नहीं बस एंड्रॉइड और टच स्क्रीन चाहिए ठीक है तो वो हो जाएगा बहुत सारे डिवाइस हैं उस चीज़ के लिए We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and YAB. The first person who comes to mind is xilonen at the Masters of the Nightwind. The one we call Granny Eats to Lead. क्या we need to find a consultant who's expert of all things Night Kingdom and YAB. The person who comes to mind is xilonen. Okay, ठीक है. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. भाई ऐसी की तैसी कर दी है उस डिवाइस की मेरे को याद है अच्छे से क्या नाम था उसका Well, yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. Great going, Malika. We're already off to a rocky start here. एक बार interaction बस In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Lali would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Okay. Literally understand the whole situation and the audio from the face to her, okay? I'm sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though.
All right, Kanish is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. क्या हुआ मैं बताता हूँ क्या हुआ अरे देखो ये हुआ ना कि अपडेट आया था iOS 18.1 का अब वो अपडेट करा ना अपडेट ना स्पेस खोज रहा था तो जैसे तो अपडेट नहीं कर सकता तो I'll contact him right now. Okay. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. पढ़ जा okay. अरे मेरे फोन में कुछ नहीं है किस चीज में बात हो रही है? वीडियो फोटो कुछ नहीं है जितना भी है ना वो बस मेरे गेम कवर करते हैं जेंशन कवर करे हुआ BGMI delete. हाँ डिलीट कर दिया बीजेएमआई हाँ ठीक है और बाकी सब Time to go. ऐप है एक दो वीडियो एडिटिंग Time to go. बाकी सब चलो मैं VC में स्पार्किंग 0 स्ट्रीम कर देता हूँ, किसी को देखना है तो देख लो। अरे दक्ष तेरे को देखना है तो देख ले। स्पार्किंग 0 ड्रैगन बॉल स्पार्कलिंग 0 जो नया गेम आ रहा है आ चुका है Yeah, I'm sorry to put this on you, Kanish. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. और कोई हो सके तो रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड मत करो। ड्रैगन बॉल नहीं देखना बंदा आल किलो पुल करना रेगुलेट करता है बंदा वो रेड सिग्नल घटी है Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? तो जाके नॉर्मल के सर्वर में देखता हूँ एक आध टाइम। ये अलग है शायद से इसी वाला गेम है We all saw a hero of the past re-materialize right before our eyes, and then Mulani said that return of knowledge will suddenly floated her brain. Okay. नॉर्मल अलग गेम है ड्रैगन बॉल देखते देखो Gameplay from the Night Kingdom, including the reason behind the appearance of the hero, as well as the current state of the Night Kingdom. Right. She mentioned there are 6 heroes and that xilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Okay. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. मैं अचानक से सैड क्यों जाते हैं इन लोग? I have मैं कनीज की वॉइस में कैसे बोलूं? Another piece of intel to share. We pretty much identified the person who rescued the captain in the stadium of Skull. Okay, कौन है? Ororon. मेरे को लग ही रहा था वही दल्ला साला. And he also hails from the master of the night wind. However, he spent most of his life living out in wilderness by himself, away from the rest of the tribe. Okay. That's why this went unnoticed. By the time Citlali finally realized that he was gone, no one had heard from him for a quite while. Yeah. Citlali knows him too? Of course she does. Orphan raised by the chief of the masters of Nightwind and many others kind-hearted people in this tribe, still he had something of an odd reputation in his whole clan. Also he lives. Odd, huh? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Okay. तेरे अकाउंट का पासवर्ड दे मेरे को क्यों देना मेरे स्किन आ रही है लेनी पड़ेगी। क्या करना है ठीक है। बाय द वे तुम लोग ड्रैगन बॉल लेजेंड्स और दोखान बैटल की बात कर रहे हो क्या है ये? नहीं लग रहा था हम लोग के अकाउंट में खेलना चाह रहा है अपने देखो वो मोबाइल गाचा वर्जन है एपिसोड का। ठीक है देखते हैं। मैं भी देखूंगा मेरे को क्या पता चलता है कुछ। But Paimon wonders how Citlali could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her तू room. पहले xilonen का देख कैसे वर्क As of now, we still haven't been able to confirm whether Owen joined the photo voluntarily or if he was coerced. Citlali is probably eager to prove that Auroran hasn't betrayed his people. I plan to use this as leverage when I go to talk to him. Huh, so चलिए if मैं तो I'm DPS following, है why use you her as mean we'll buffer? help her हाँ investigate ठीक है Auroran C6 and करो the सारे captain's DPS है फिर whereabouts. तो C6 बारबरा बेस्ट DPS। अब बात करो। हेल्प इन्वेस्टिगेट Auroran। कोई हो ही नहीं सकता। If you have credit card सारे DPS है मेरे हिसाब से तो। एक
Yes, for all on board with the idea when it comes to mutual beneficial cooperation rather than just one side request. नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक स्वाइप मारो 1 मिलियन. With the idea, then it becomes a mutual beneficial collaboration rather than just a one-sided request. Okay. Good idea. Yeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. This is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Niche. Molly Poke. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. Okay. I'll be heading back as well. There are still a few things I need to pack. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. डे आफ्टर टुमारो बोले ना, तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, वही होता है. Oh, it's time to meet up with xilonen. Let's ask her how things have been going. I follow the wind. पहुंच जाओ जल्दी से. xilonen रुकनी नहीं चाहिए, बस म्यूजिक आ गया भाई. Hey xilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Seat Lolly did not reply to our request, although I suppose I'm not too surprised. Okay. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? She really does have quite the ego then. अरे इसमें भी अचानक से अपीयरेंस होता है ना उसका. मैं शॉर्ट बॉय भी She स्ट्रीम में can देख be रहा था. also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. अरे Even the रुक जाना. Masters of the Night went off and अरे struggled to टिटलाली work का. with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go. Let's go. काश पाइमॉन की वॉइस एक्टर थोड़ा टाइम के लिए नखरे कर दे. वही तो फिर मजा आएगा भाई गेम में. फिर मेरे को सब याद रहेगा. टीवी होगी ना. Oh, see, confirmed. Sounds like that's one. Life is still life. But forever was from for me, not really aside from forgetting lyrics while I was thinking. Shouldn't believe it, but no. ठीक है, ठीक है, ठीक है. दादाजी तो कहानी सुनाने लगे. Which Lily is not there. Yes. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? उसका एक सॉन्ग है. नहीं. अबे तू मेरा आईडी लेगा, शोर कीपर पुल कर देना ग्राइंड करके. गारंटी में. बता.
नहीं मेरे में बहुत रिसोर्स है ना, मैं तो अभी 15 या 16 कुछ में हूँ मैं, 15 भी नहीं तो 13 या 12 में कुछ। बता कितने दिन बाकी है मेरे को याद नहीं, पर ट्राई करता हूँ बाद में दे देना। 16-17 दिन बचे होंगे अभी भी शायद, मेरे ख्याल से, अगर गेंशिन जितना टाइम है उसका तो। बाद में भेज देना। हाँ फिर करता हूँ कोशिश। Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. गारंटीड है ना तेरी? That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. ये देखो friends with the Archon, मतलब बात ही अलग है। Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny अरे देखो Eastly, ये लोग। right? Does she think she can आ ignore गया। us just because she's famous? ये वही लाइन है ना, ठीक है, आ जाओ। You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. अच्छा कैन वैसे अभी इंग्लिश में खेल रहे हो ना? Yes। That's what aging does to you. Paimon never नहीं wants आएगा, to get क्यों old. आएगा? अपडेट आएगा उसके साथ आएगा ये सब। हाँ वो भी है। Oh, really? So, that's how you see me? इसका अच्छा है, जो लोग जापानीज में खेलते हैं उनका फायदा। Who's there? Who's talking next to Paimon? जैसे कि मैं हो गया, ये हो गया। Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? जापानीज वाला है। Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. जापानीज में खेल। Wait, you're Seat Lolly? You're Granny Eatstly? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. Not Granny. Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a जा फिर seasoned से कर। veteran. क्लच बताओ कब आओगे ट्राई sage करने? who looks कल like a परसों में little करते हैं। आप अभी डिस्कॉर्ड में बताओ कैसे करना है, फिर कल परसों में करते हैं, क्योंकि अभी आज तो और कल भी शायद नेटलैंड का यही होने वाला है, आर्कन क्वेस्ट। Oh, wipe that look off your face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? उसका आइडिया नहीं है। Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to अबे mention? She's देखता हूँ ना मैं बाद called में, अभी Granny, कैसे but पता करेगा मैं? she's actually pretty young. उस गेम का ट्रेलर पड़ा है, भेजूं? खतरनाक है भाई गेम। It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. एज पता, How old are you actually? एज रिवील। What? How dare you? अच्छा Don't you ठीक know है, it's पता था rude ऐसा to कुछ ask a होने lady वाला है। her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. वैसे एक चीज है, Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. क्या दादी अम्मा Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. फारूजान के साथ भी सेम है, वो 120 साल की है, दिखती है। It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. रिसर्चर है भाई, रिसर्चर। जो भी है, लेकिन साइंटिस्ट एक तरह से उसने कोई ऐसा पोशन बनाया हो जिससे वो जवान All right. I was Sci- only joking. I didn't mean to chastise उसका anyone. फील्ड है भी नहीं, There's साले really no need पोशन to take all मेकिंग। this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. ठीक है, मेरे को जहाँ तक याद है ना, वो किसी ना उसमें ट्रैप्ड थी बहुत टाइम तक, ड्यून या फिर डंजन में, और जब बाहर निकली तो 100 साल बीत चुके थे, जहाँ तक मेरे को याद है थोड़ा बहुत। हाँ यही ऐसा ही कुछ तो है, मेरे को भेजना पड़ा। I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I I had think already trapped decided थी to वहाँ पे। come,
I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part, no? But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. No, Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. What's with that expression? Expression. Was she feeling embarrassed just now? Is she waiting for us to carry on the conversation? Sounds like a joke, but I'm not sure if I should laugh. Would it be rude to laugh or even more rude not to laugh? The Masters of the Night Winds say they struggle dealing with her. I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, xilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Okay. Correct. The situation situation isn't like anything we've before. handled Let me before. explain. Jaldi. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. ये voice आधे आधे मेरे को He's करती always है been a लोग good मेरे को ये kid. जानना है. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, Okay. come here. Let me take a good look at you. भाई ट्रैवलर ताड़े की है अभी. ओके ठीक है. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. क्या हो रहा A है ये? weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest, will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. ये मेरे को ये जानना था ये क्या था? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! भाई That should do wow. it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Okay. In that case, better to get rid of them. It was nothing. Thank you, Malidi. It was nothing. Thank you. xilonen, लेकिन फिर भी- let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom,
constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not ठीक है, मैं नहीं exactly. बोलूँगा कुछ. It's not so much that one's more powerful than the other. Exactly. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? देखो मेरे को तो जानना है कि उस आर्टिफैक्ट की बात होगी कि नहीं जहाँ पे जो तोड़ के आए हम लोग. I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. भाई नेटलैंड में Alright, 5 स्टार्स now कम it's है time ना. for us to catch that brat and bring him back. Sorry, 4 स्टार्स कम है, 5 स्टार ज़्यादा है. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. ये थोड़ा ज़्यादा But हो गया. why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. कहाँ जाना था भाई? All names are noble ना, और दूसरा एक्ट क्या है? To wear the smoke drifts, ठीक है. 3 क्वेश्चन है, सेकंड सीन है. अच्छा नहीं, 2 बार आया तो पहले का अभी आया, फिर से लेट आया. छोड़ हो गया मेरा पहले वाले से. नहीं क्या बोलते हैं, ये अभी वाला है, पहले वाला फिर से आया. पता नहीं पहले वाला ये दूसरा वाला है, जो भी है जो टीम को कैरेक्टर बिल्ड नहीं है. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him, or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Didn't Kanich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in.
You could say that everyone had a hand in raising him. He learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Elemental sight. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. Okay, ठीक है नहीं. मजबूरी तो नहीं बोल सकते, आदत बोल सकते हैं. How about now? What do you see? Okay, I can see the trail now. Whoa, Paimon can see it now too. That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. Competition. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Vision क्यों? Over here, this way! See, Lolly might say a lot. Something. What was that? Oh, Paimon was just complimenting you. Really? हो गया? What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns, but given the looks on their faces just now... Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Wait, but it wasn't with my ears. Was it all in my mind? Was that Seat Lolly's voice? Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Bye, wow. So something like this could only happen with Lali. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Hey, looks like there's a new camp over there. Yep. Judging by Paimon's experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. नाम बता.
क्या हुआ है? कौन? शॉर्ट बॉय तो है। अरे माइक बंद करके बैठा है वो। उसका स्क्रीन शेयर देखो। Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Fast. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. दोनों के awkward expressions. सोचा नहीं था कि मुझे राइडिंग मिलेगी, मैंने कुछ समझा नहीं इसके बारे में। रोटेशन सीखने में टाइम लगता है। Time to go. ये स्पेयर है मेरे पास, बोल। There are traces of people staying here too. ज़्यादा अच्छा पर इसने दूसरा वेपन पकड़ा रखा है ना। Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. पायरो कौन? ठीक है, चलो फटुई वाले लोग तो पायरो है, क्रायो, इलेक्ट्रो। ठीक है। फटुई skirmishers. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. Brat. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? हार्लकीनो की टीम में भी वर्क करेगी। मैं YouTube पे अभी जस्ट ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को हार्लकीनो का भी अभी एक दिखा था, xilonen with हार्लकीनो न्यू इलेक्ट्रो टीम। Given there are two signals leading from here, we should split up as well. I'll take this direction, and leave the other one to you. Let's meet up again later. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. You little brat. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Yep. Once Seatlali left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. पाइमन को फिर भी तो ब्रांड बोली ना। भाई ऐप लोग साथ में रहते हो के डिस्कॉर्ड पे हो? डिस्कॉर्ड पे हम लोग। Paimon sees
some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with him. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. Oh wow, what a voice. वायब और कौन है? भाई टेलीपोर्ट कर दिए क्या हम लोग? यस टेलीपोर्ट कर दिए। वाओ रुक नहीं है क्योंकि मेरे पास शाव है तो मेरे को एक और ब्लैंक डिटेल नहीं चाहिए। और डीलुक में पूरे बिल्ड करने के लिए बहुत आलसी हूँ। I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. हाँ तो कर लेगा जैसे साले नल्ले हल्के में लेता है। I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. Okay. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the Masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Capitano. Greetings, traveler from afar. Greetings. Joby. Be careful with this traveler. Her soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to her. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. मेरे को एक बार लड़ना है यार कैपिटानो से एक बार लड़ना है बाद में देखेंगे जो होगा You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Yep. समझ गए
पायमन उठा के ऐसे बैठाई क्या हमको? Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! She froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. Okay. If they were being truthful, they must have reasonable motivation for what they did, but I should trust them. Okay. But that means give up on the lead. Hashtag event. It must link with either the Patui or the Master of Nightmare. I support us. Stay quiet for now and see nothing else. Okay. If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exercise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. I'm feeling fine now. In any case, let's take a bit more time to rest now. Even though the station remained quite urgent, I mean, like slightly keeps her eyes on performance checkup. Okay. Need to be more. Feeling better yet, Traveler? Yep. All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. Oh, so it's close by. Then let's head over right away. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Time to go. भाई कैपिटानो मरने वाला है मेरे हाथ से नहीं मिलेगा प्लेबल तेरे को उसको तू मारेगा ना उसके घर पे जाके घर पे घुस के मारूंगा मैं Look over there. घर में घुस के मारेंगे Huh? I think she sees someone in the middle of the camp. Auroron. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. कौन है अच्छा नहीं मेरे को कैपिटानो आ गया I cannot see the sun. What? Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. भाई protective side unlock ठीक है See, Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? Let's go kick their butts. On my count. 3, 2, 1 चल रहा है Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. No excuse for saying this quickly. Overruled. As one with wind. हाँ बहुत सही भाई उसका शील्ड लग जाता है मेरी ऐसी तैसी हो जाती है Let me weave you a verse. Know my sword. May my transfixed. Wind Strider. Fallen leaves. Adorn my night. Looks like I. Auroron Auroron. Granny. भाई कितना
ऑस्कर दे दूं क्या मैं इसको इस एक्टिंग के लिए? Paimon knows she's called Granny Eats to Leave, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. Yes. And greetings to you too, other granny. Other granny. भाई granny बोल दिया भाई. What did you just call her? Granny. Is that not right? You are Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you're also a granny. मतलब सेंस तो है बात में लेकिन How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. कौन है ऐसा भाई? रेजर, हाँ रेजर, लेकिन वो बड़ा दिखता भी तो नहीं है. Your words have pierced my heart like a thorn vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just, Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. That was good. So you treat everyone like their uncle or aunties? Exactly. Exactly. सोचता कहाँ है ये? If you keep that up, then everyone's going to be your senior. Do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Okay. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. Okay. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. भाई एक्सट्रीम चली गई है तो. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. अरे तो गवार इंसान लीसा और शिंचो की जगह तू उधर क्या They बोलते हैं? didn't hurt you, वालानी की टीम में did किसी और they? को डाल दे और इधर xilonen और इसको No, डाल दे. they just asked me a lot of questions about Matland's Guardians का terrain क्या ही and बोलना है made me भाई? draw a map of the ley line पूरी ऐसी वैसी कर दो उसके बाद पूछो. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes, So why did you do it? तू उधर xilonen Because- डाल मैं बोल रहा ना. because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary वो ना कहाँ granny. से attack buff Would they देना really चालू कर dare to दी. come वो after damage me? bonus देती है, elemental And damage you? bonus. Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value? And not stop to think? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind, and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? भाई ये तो मतलब I'm sorry. Ugh, forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your अरे innocence. ओ चाचा पहली बात तुम वालानी को Let's second half में clean क्यों this डाला? place उधर up and hydro get back to enemy the city.
Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... क्या? Recite the 3 warnings. No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! मेरे को लगा recite the 3 warning वाला क्यों आ गया वापस? How exactly did the masters raise this guy? इसको बचपन से स्पून फीडिंग कराना पड़ा है, मैं बता रहा हूँ सब चीज में। भाई यार क्या एक्टिंग करता है, लेकिन माँ की कसम। बताइए आ गया देख के। हाय भाई, ओ बेनेट उस साइड था। बेनेट नाविया के साथ ज्यादा बेटर है रे मुन्ना, और डबल पायरो से नाविया को ज्यादा अटैक भी मिलेगा। एक बात बता, शॉर्ट बॉय क्या कर रहा है? को एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट के कैरेक्टर चाहिए ना। इग्नोर मार दिया भाई। पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ वो क्या कर रहा है? क्या तू क्या कर रहा है? चाहिए। हाँ ये लोग इसीलिए तो बचर कर रहे हैं तेरी आवाज। रहने दे भाई, मत बता। So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for xilolen's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Okay. I need to stay here? Technically, yes. But if Miss xilolen is willing to serve as your guarantor, we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. Sir, yes, I sir. understand. Thank you. And thank you too. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to xilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. You Thanks scratch my very back, much I scratch appreciated. yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. मत करो sound effects. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. मत कर शॉट। अब सुनाई दे रहा हूँ अच्छे तरीके से ना? सुन भाई, मैं जवाब भी दे रहा हूँ कि आ रही है तेरी आवाज, तू भाईरा होकर बैठ गया है। Goodbye, other granny. अरे भाई, this new grants of mine is way too cool. अरे भाई देखो। शॉर्ट्स बॉय 1 सेकंड सुन ले मेरी बात, आवाज मत कर। मैं अभी हॉल में अगर बैठा हूँ तो सब लोग सो रहे हैं इधर। That look on his face is so that remind me about my promise. Okay. अच्छा, तो मैं क्या करूँ? नाचूं? आवाज मत करो, उठ जाएंगे भाई इधर मम्मी पापा। हेलो मम्मी जी, उठे ही है। देखिए आपका बेटा बहुत परेशान है। Finally done. All right, it's time to find some तेरी grub. तरह नहीं हूँ सबकी नींद बिगाड़ू। नहीं मत बता। अरे यार। प्रो प्लेयर भाई। Keep your voice down. Sorry. Paimon just didn't see अच्छा नहीं लगता भाई, पाइमन समझो So तुम। you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting xilolen and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. अरे तू मार किसको रहा है? पहली बात, तू हवा में क्यों मार रहा है?
Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will I'm support her supported choice twice no no matter matter what, what. so if you You want wanna to go? we can go We can together. go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. मत मैं ये बोला 8 भी बजे नहीं तक अबिस रुकने कर वाली क्या बात भी होती बोल है? रहा हेलो हेलो अब अरे मैं कभी बोला मुँह वाला नहीं यूज नहीं करना मैं बोला मेरे को शाओ का टीम बना के दे मैं ऐसा थोड़ी बोला कि मेरे को मुँह वाला नहीं यूज नहीं करना मुँह वाला नहीं को मैं यूज तब करूंगा जब मेरा मन करेगा जब मैं नाविया को यूज नहीं करूंगा नाविया के लिए टीम है ऑलरेडी भाई टीम है ऑलरेडी देख ले तेरी नाविया की तो अल्टरनेट टीम बना वो मुआलाजी के साथ नाविया को मत डाल मैं बोल रहा किसी और कैरेक्टर को डाल अबे हंटर सेट मेरे को समझाओ तो जरा हाँ मोना टीम के है कि नहीं मेरे पास मारो चूज से हंटर इधर हम स्वर्ल क्या करें पायरो स्वर्ल करूंगा फिर नॉर्मल उससे एंड चार्ज वेवराइट अटैक मिलेगा डैमेज व्हेन करंट अटैचमेंट क्रिटिकल रेट विल बी और इंक्रीज्ड बाय सुक्रोस 12%। वैसे भी डैमेज बोनस नहीं देती है जैसे कि वो देती है और जैसे कि वो देता है काजुआ हाँ शाओ में यूज कर सकते हैं कि नहीं नॉर्मल और चार्ज अटैक कहाँ होता है प्लंजर्स होता है अब इसमें ट्राई करने का फायदा नहीं है भाई फिर से सुक्रोस एक शॉट में मरेगी xilonen एक शॉट में मरेगी खत्म भाई एक शॉट में मरने वाले हैं वो लोग Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. कैपिटानो इसको अगर हाँ कैपिटानो का है What was that? निकालने में Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. force of habit जान नहीं रहा हूँ And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. सेकंड में खत्म Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? नहीं Well, I could. कैपिटानो अरे यार नहीं आ रहा है क्या It's all clear. Over to you. Excellent. Okay. The fact that you showed up proves that I was right about your character. कैपिटानो का थीम बैकग्राउंड में चल रहा है मैं इसको डाउनलोड करूंगा Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. चाइल्ड भी यही बोला था लास्ट में आर्लेकिनो भी अरे भाई तुम सबको यही क्यों चाहिए If we allow the current 12 state स्टार of things ब्रेंजर to क्यों बनाना continue, चाहते हो मेरे को we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. Okay. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind, guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank,
It's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tibet, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along? The details of which she has chosen to keep hidden from you. An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. Okay. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the Abyss. We have to make the decision for her, here and now. That's your speculation. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa's plan? Here, by seizing the Gnosis and making a decision for her, could he mean that the Gnosis has something to do with this backup I plan? knew you to be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains भाई unchanged. देखो, अब मेरे को भी लगता है कि कैप्टन का ओरिजिन नेटलन से अटैच है, ठीक है, कुछ तो रिलेशन है नेटलन और कैपिटानो का. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. कोई तो आया. Someone's here. Let's see, कौन होगा? Guess करो कौन होगा? कनीश, मेरे हिसाब से कनीश माविका. नहीं तो सिट लाली. The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Oh no. Something! Bad news, chump! It's your granny! भाई क्या दिया है, मजा आ गया. वो बेसिक अटैक हरन बेसिक अटैक डैमेज देता है और कटिंग एक साथ अटैक डीपीएस है. I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? भाई क्या मारी रहा, मजा आ गया. Here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? Now you are talking back. पहले चुप रहने से मना करते हैं, फिर उसके बाद बोलो तो फिर ज़बान लड़ाता है. अरे ये कौन सा भाई गार्डियन बिहेवियर है? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. लीसा बेटर होगी ना, वो ऑफ फील्ड भी है ना या फिर That's पेड it. होगी. Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... एग्जीक्यूशन में आ गई ये. Wait, Silali! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Again. Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay? Hey. So yes, sir.
शॉप एक काम कर, शॉप में जा. The general in the next है too and the smoke trips. है ना फैब उस पे है ना ट्रैवलर तो वो भी लेवल अप करना. कुछ भी नहीं मैटर. 4 piece 2 piece कुछ नहीं. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! निंगवांग को मैं उसके सिर्फ स्किल के लिए यूज कर रहा था. ये निंगवांग से स्किल मारूंगा और फिर खत्म. वो तो बाद में फार्म कर दूंगा मैं. 2 piece बोला ना तो उसके लिए. Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? बेचारे को कुछ नहीं पता. Really? You're just going to stonewall me? ठीक है, ओपिनियन चेंज. ओरोन बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरे हिसाब से. ये नहीं, पहले वो HP सैंस को लेवल अप करने का ट्राई कर. Just use your brain for a second. जो भी crit damage What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. बेचारा. Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. It's fine. पागल है क्या? ट्रैवलर है जैसे कौन बोलता है? Indeed. It's like going to visit a मतलब friend at second his option में house कुछ better only नहीं to था. suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. हाँ? Well, that's an oddly specific analogy. Wait, did one of your friends really do that? Yes. And every time my friend scolded his Saurians, they would look at me the same way you're looking at me now. Helpless and embarrassed. अबे यार क्या मजा आ रहा है लेकिन ओरोरॉन को देखने में बार बार. एक क्या ही कैरेक्टर है भाई. Indeed, you've got a point. Then please just hang in there for a little while longer. Granny should be done with her scolding session soon. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... अब देख लो, अब इसमें हंसू भी ना मैं. Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't need anything from अच्छा ठीक है, you. इसको सॉरियन का नाम ईफा है क्या? Who's Aoife? A delivery person? सॉरियन मेरे ख्याल से तो. That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so Okay. he must be no good. You kids get to a certain नहीं age and पता. suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty,
Then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. Left out. That's not it, Granny. Okay. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? ये क्या है? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. यो गेंजुत्सु दिखा रहा है साले. नारुतो देखता है. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? Okay. What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? नहीं बता दो थिंग आ रहा है अभी. It's a trick of his. जादूगर है शॉर्ट बॉय ही बैठा होगा लगता है मेरे को. Spray it in the air. It can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his हे legs. भगवान ये कितनी एक्सट्रीम है चिटलाली. कैसे बात करती है ये. Whoa, that's a little extreme. But तो भाई फिर भी HP तो है. why does he feel like he needs to run from us? If तो his अगर goal is पूरा also to मतलब full protect HP में Natlan, क्या then 1200 can't we flat work HP. together? एक काम कर जो वो है ना I'm एक और sorry HP for था interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Oh, that brat. I swear. भगवान भी बोले हाँ भाई करते उसको ले. Meeting again is out of the card for now, so it might be faster to upload the pyro organ and confront that captain said, and also it was किरारा को वो दे दे डबल एचपी वाला दे दे किरारा को. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to figure out how to explain all this. करूँगा भाई. पहले xilonen करूँगा फिर किरारा को करूँगा बिल्ड. वॉक करके जाता हूँ. तू तो वैसे भी अभी नहीड़ा भी निकालेगा. रख सकते हैं. वो क्या हुआ 3 ही रख सकते हैं तो. अरे मैं 5 रख रहा था भाई. ओनर का अकाउंट चलेगा. फिर से डाल दियो आईडी पासवर्ड बाद में. Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? Oh, right. It's been a while since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drinks are on me. How did this become Paimonville? ओए अगर तेरे को सुन HSR में अगर तेरे को क्या बोलते हैं फार्म वगैरह करना है ना तो मैं अपना अकाउंट देता हूँ उसमें तू खेल ले ऐसे टाइम पास. It's on Paimon this time. Yes. What's one meal to the best guide into that? एक बार चीज बता दूँ तेरे को मेरे पास ठीक है. HSR में So you इतने can just sit कैरेक्टर्स back and बिल्ड है enjoy ना it, Polly. मेरे पास 3 Paimon will बिल्ड take है care of HSR it. में 3 पूरी Hey, टीम्स. come जिंदगी on में now. पहली बार इतना You won't बड़ा even let me मिरेकल हुआ take है. you out for some food and drinks? We
just wanted to treat you to a meal. Are you sure? We can save you some more. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I like to think I'm not completely useless. Sure, that's fine with us. But Paimon doesn't want you to be sad, sweet lolly. क्या ये देखो फिर ऐसे बात करती पाइमोन. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. यूनली बच्ची अभी आई थी, वो इसके पहले आई थी, पेशाओ के पहले. Where we going? किरारा की स्किन नहीं है तेरे पास? खुल जा. मेरे को तो मस्त लगी उसकी हैट, मस्त लगती है. अरे नहीं, मैं मॉड यूज कर रहा था ना, इसलिए मैंने हटा दिया. अच्छा यहाँ पे किन भी ना मैं भूल गया था. क्या मॉड यूज कर रहा था? अरे वो स्किन मॉड रहता है. वाह, बंदे को बैन होना है भाई गेम से. तू कितने, पहली बात तू कितने पिन लगा के रखा है भाई? 100 पिन, 240. लूम के लिए मैं अभी भी प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को आया का चाहिए. अरे तो घट में आया मैं गाली दे सकता हूँ? मैं नहीं जानता भाई, तुम लोग अपना अपना देख लो और लिख के भेज दो उसको गाली. गवार इंसान, मैं देना नहीं चाहता गाली छोड़ दे. गवार इंसान Do अभी you नया see फीचर ऐड two किया है ना, गो people टू standing कलेक्ट by कर, the तो door? क्यों मार्क करके They No. look like spitting images of each other. अच्छा ठीक Are है. they twins? सच बता रहा हूँ. भंडे आई मीन ड्रंक है. क्या बोल रहा है? But Paimon only sees one person there. जगह बता देता है, ढूंढना अपने को खुद ही पड़ता है. और साकुरा How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, तेरे पास boss. गोरो है ना, गोरो ले. तेरे को मैप में गोरो लोकल स्पेशलिटी Yes. दिखाएगा नहीं नजुमा का. ठीक है. She's drunk. There you go, miss. Oh भाई, my! इतना- It's not every day you get to see Granny Italy here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves recently. ठीक भाई है. गोरो को पार्टी में रख, कैरेक्टर ऑन फीड कुछ और रख, पुरीना Of course रख, अपना I am. Alakino राइडन Aren't you जो the ones who रखना saved है, on Kachina feed and कुछ brought her और back? रख. इधर No उधर wonder you hit it off with Granny Lolly. She इलेक्ट्रो wouldn't spend कैरेक्टर रख, time with कुछ just नहीं तो पिक्चर anybody, रख. you know. पिक्चर काम भी आएगी. Wait, so ऑन you फीड call her पिक्चर से ही तो फिर Granny साकुरा ब्लूम ले सकता है ना तू. Well, given our ages, it'd probably be हाँ, more दिमाग accurate for लगा me to भाई, call her my Oh, okay, great क्या? granny. She's क्या one of the मर गया most तेरी famous सुक्रोज. people at the Masters of the Night Wind. Most days, hardly anyone आ even गया dares भाई. talk to her. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, Granny. I wouldn't मैं dare. दूसरी बार देखा I'm वो just पूरी beyond फिल्म. happy to see you bring over some new friends. After हाँ, all, any box friends नहीं of use our करता क्या? regulars टिफिन are बॉक्स नहीं sure use to be करता great तू? customers too. ये देखो. Business. This is business. Wow. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. तू पहले There's no need to build तो keep दिखा staring दे. at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. इनकी build तो दिखा गवार इंसान पहले. Well then, you have my thanks. साले बैटल पास का वेपन दे रखा है, फिर मेरे को बोलता है. भाई बहुत बहुत क्लियर दिख रहा है, क्या करूं? Yo, expressions. बहुत बहुत अच्छा सुनाई भी दे रहा है तेरा आवाज, क्या करूं? 12 क्रिट डैमेज है. Who's that? और ये इसमें 10 क्रिट You got some gall calling me by my first name. 26 क्रिट डैमेज और 4. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? It's sleep. Are you still with us, sweet lolly? You're kind
You chumps come around here, picking fights with me. You know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. मैं रोने लगी I mean, हाँ come on, monster? Me? अबे Really? तुम लोग अभी स्टोरी नहीं की होगा नेटलैंड का Do to deserve that? करना पता चल जाएगा भाई सिटलाली का कैरेक्टर भाई Lolly, you're not a monster at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know. पता चल जाएगा अभी 2 मिनट रुको Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, No. you. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. भाई वो हिकअप्स Did she just fall asleep with her eyes open? Oh, jeez. अबे यार Behind this pitch-black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering smoke. Ah, she's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually racing at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Citlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Okay. Warning, warning. Red, red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. ओके पायरो आर्कोन की बात हो रही है यहाँ पे सिटलाली डिविनेशन भी करती है क्या Traveler? Paimon? ठीक है अभी थोड़ी सी है ड्रंक What's wrong? I'm gonna hurl. Hang on, just keep it in. Phew. Okay, it's passed. That was a close one. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. ओके How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up. Not once. Are you feeling okay? Want to take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say, but I can't. Why not? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Please, Paimon, it's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? गुड पॉइंट Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame. I've lived all these years and still can't get rid of it. Surely you know the feeling too? Actually, about that. Huh? Tell me what?
Yeah, this is as good a time as any. और शटलाली क्या बताने जा रहे हैं हम लोग? Listen carefully and try not to get too upset. Once rescue as objectively, fairly and impartially as possible. To our temporary thoughts, okay? Okay. Breakthrough. So, you heard my... It's okay, Lolly. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Of course. Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much! It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing! Okay, ये हो चुका है पहले, I know. So that, happens to you a lot. It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Take a walk with me. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. सही. मेरे को भी कब सारे वाव. Okay, okay. क्लोरेंट अच्छी बिल्ड भी है और उसके पास काजुआ वगैरह नईड़ा वगैरह सब है ना इसके लिए. इसके पास सपोर्ट भी मतलब बेस्ट है. और कितने देर चलेगा पता नहीं भाई. कितना लंबा क्वेस्ट है ये. I love coming here by शॉर्ट बॉय myself. किया है 6-7 घंटे बता रहा है वो तो. Wow, it's beautiful. You're making me want to cry. अच्छा बुरा नहीं. Oh no, what do we do? Please don't cry. I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even after you helped me all this time. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right. I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. But you're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsley is a powerful figure. Be careful around her.
That's what they'd say. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, लंबा जीना तो मतलब कर्स है इन लोगों के लिए, कितना भी जी लो कुछ नहीं होता इन लोगों What का. about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. Okay, how? I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said anything. We believe you. Xilonen has full faith in your abilities, and Aurora didn't seem scared of you. He thinks of you as his granny, right? Yes, but Auroron's a special case. ठीक है, और उनका बैक स्टोरी. Mawika already told you about her plan. ठीक है And नहीं. you've given so much help to Auroron and me. You deserve to learn the full truth. शायद है बैक स्टोरी. Okay. Auroron's not like other people. As I mentioned, he was abandoned as a child. ठीक है. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild beast. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls, and in Auroron's incomplete soul, they saw a possibility for Natlan. A possibility to turn Auroron into a vessel for lost souls. सब चीज में opportunity है The भाई. ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroron would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. This loss of souls damages the Night Kingdom even further. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Auroron, would be sacrificed in the process. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It failed, and Auroron escaped with his life. Pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. Maybe they didn't have my explicit approval, but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, Auroron would probably be dead. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as a tool? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it behind me...
He asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? Wait, but it's not his fault. He knows that, but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with ley lines has become. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. I can only imagine what they told him. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back! You don't look so good, Seatlali. Maybe you should head back and get some sleep. Probably drank too much. It's okay. The fresh air is doing me good. Okay. Forget that. I need to go home. I hit it a little too hard. You've helped me so much already. How do I even begin to thank you? अभी तक आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा है क्या? अभी तक का क्या मतलब है भाई? आर्कॉन क्वेस्ट है. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next move in the morning. 6 घंटे का है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसके भी मारने वाला हूँ पूरा. कितना बड़ा है? 7 घंटे का है वैसे तो, 6 घंटे का नहीं है. I like the sound of that. स्किप मार रहा हूँ. मार दे. स्टोरी की माँ की. जय सुप्रसाद. Auroron's probably back with the captain, don't you think? वुथरिंग में मैं स्किप नहीं मारने वाला. वुथरिंग का तो पूरा स्टोरी पढ़ूंगा आपके बाद. Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. एक कैरेक्टर उस गेम में शोर की. अरे वर्थ इट है भाई. मैं तो बोलता हूँ 1-1 मिनट वर्थ इट है पूरे स्टोरी का. अभी तक तो मजा ही आ रहा है मेरे को बहुत. सीटलाली और ओरोरॉन का इंटरेक्शन देखो, मजा ही आ जाएगा. अभी आगे सेकंड फेज में जाओगे तो वहां पे उसका मिलेगा, क्या बोलते हैं, शिलोरेन और माविका का इंटरेक्शन. मत कर अक्की, क्या हो गया तेरे को? ठीक है फिर स्किप नहीं मारता हूँ आज. पहली बात तू बोलता है तो. ये भाई. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. फेशियाओ का जो इंग्लिश वॉइस है, Go to bed. उसको हटा दिया. पता है, देखा मैं. अरे हाँ, तेरा HSR का अकाउंट का यही सेम है पासवर्ड. सेम है. आईडी पासवर्ड तो सेम है. तेरे अकाउंट में घुस के देखना होता है बस क्या है. एक मिनट. लेकिन हुआ क्या? खेलना नहीं आता ना, ठीक है. मेरे को सिर्फ तो स्क्रीन शेयर कर ले, दिखाता हूँ, समझाता हूँ तेरे को. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. आज वो तो अलग ही बेटी में जीता है. It is the last link I have to the land of my birth. अब हमारे ड्रीम सीक्वेंस में क्या होगा बताओ? ठीक है, कुछ तो हो रहा है. ओके,
Paimon is not floating. Why is it so noisy outside? Paimon still hasn't sleep. Well, guess we should see what's going on. कहाँ पे? रुक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Time to go. वो थोड़ा डाउनलोड करना है, रुक जा। डाउनलोड हो रहा है। 60 MB का 60 MB। भाई तो क्या गाने चला के बैठा कर सकते? भाई ये गाना बहुत बढ़िया है, ठीक है तो सुन ये देखना ये गाना। हाँ You're already here. I was just about to come get you. Wow, you're up early. That's impressive, especially after all the drinking last night. Let's not bring up last night. I'm embarrassed about the whole thing. Anyway, I was also woken up by the commotion. Looks like all the warriors from the stadium are on the move. I heard many areas have been attacked by the Abyss, including the Masters of the Night Wind. किसको बोल रहा है? I need to head back right away. किसका नाम है इधर? अच्छा मेरा नाम लिया कि मेरे को सुनाई नहीं दिया। रुक जा, मैं लगा लूँ। देख जो चेन क्वेस्ट में पहले के 3 है ना, वो स्किप मत करना, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो। बाकी उसके बाद देखता हूँ, अभी पहुँचूंगा तो। अभी तक तो अच्छा ही है। और अगर स्किप मारना है ना तो स्किप मार देना xilonen का, कनीज का और उसका क्या नाम है, कचीना का। तीनों सिर्फ सीरियस बात करते हैं, मतलब शुरू में कचीना भी ठीक ठाक ही बात किया। और ओरॉन का मत मारना और इसका सेट लाली का मत मारना स्किप डायलॉग। The Abyss attacked again? Are you sure you can handle it on your own? Do you know? हाँ वही बता रहा हूँ मैं। शुरू का प्रोलॉग मत मारना। अभी मिले तो थोड़ा बहुत सीरियस बात करेंगे वो। I'll be fine. We also have the support of the warriors stationed at the various outposts. Given the quick response, things shouldn't get too कनीश एंड कचीना तो serious. गूंगे हैं। अच्छा तू जापानीज में है ना, ठीक है तू जापानीज में सुन लेना सबका। The stadium could always use more manpower, so you should join the forces here. I'm done making excuses for him. He's not a child anymore. He needs to take responsibility for his actions. I was the one who vouched for him, so I need to report back to the speaker's chamber. I'll accept however they choose to handle the situation. But I should be able to convince them to let me go back to my tribe first to deal with the attack. किनीज का वॉइस एक्टर है ना, वो सास्के का जापानीज वॉइस एक्टर है और उसके बच्चे का वॉइस एक्टर नारुतो का जापानीज वॉइस एक्टर है, मतलब वॉइस एक्टर। हाँ क्या? As for the ancient name, once we handle this crisis, I'll talk to xilonen right away. Don't worry, I never forget a promise to a friend. Thank you. Alright, I need to start heading back. पुराना एनिमे है बट मुझे अच्छा लगता है। She left in a hurry. The situation must be really serious. Looks like a lot of people are heading to the stadium. Let's see what's going on. इसका तुझे कुछ नहीं करना है, बस तुझे हर बार उसका बेसिक अटैक या तो फिर स्किल मार 60 FPS में आते हैं। रुको यार थोड़ा देर के लिए। मतलब उसका एबिलिटी करेगा ध्यान करिए इधर है। भाई इसमें कैरेक्टर फर्क है पता नहीं। हाँ मेरे पे क्लारा का लाइक फोन है देख।
हाँ पर मैं बिल्ड Oh नहीं कर रहा, मैं yeah. Traveler over here. मेरे को नफरत है उससे। The sisters, the lolly and the over energetic hydro girl. मेरा देखो, मेरा बताओ मैं कितना मेरा कितना Oh, you're all here! But, what's the whole Star Outlander thing? Just my way of saying how awesome you are. We've got a real emergency on our hands, so this is the perfect time for you to show off your skills. हाँ ठीक है. मेरे को लगा मेरा जो Yes, दोस्त है ना, लेकिन उसका गेंशिन का अकाउंट भी है मेरे पास, मेरे को लगा वो ऑनलाइन बैठा है। उसको काम था साले को आज सुबह को, भाई ऑनलाइन रहता This था वो। suddenly attacked the Collective of Plenty, the Masters of the Nightwind, the Children of Echoes, and a number of our camps and outposts in the wild. ठीक है. Yes, and the attacks are increasing in frequency. The tribes have plenty of defenses, so they're safe for now, but I can't say the same for the adventurers and merchants stuck in the wild. Chaska and I have been searching for survivors and treating the wounded. We just got back, but we need to head out again soon. I plan on heading back to the Collective of Plenty, just in case my tribe needs me. मेरे को देखना है इसका टाइप कब आएगा भाई. What about you, Mualani? नेटलाइट एक्सपेंशन अपडेट ला दो. बाकी के 3 ट्राइब भी इंट्रोड्यूस कराओ. I'll go help the Children of Echoes. They're the closest, so I can start fighting right away. What about you guys? We could go together. Yeah, that does sound important. Oh, Mavika. No worries. Just leave the Children of Echoes to us. Mavika, phone पलट गया मेरा. Mavika. Who knows? Maybe yours truly will have the abyss on the run by the time you're finished. That would be pretty great, actually. I hope my tribe gets through okay. It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding for nothing. Let's part ways here for now. And most importantly, be careful, everyone. Oh, and some of us need to avoid getting contaminated by dangerous-looking substances. That will make my job a lot easier. Koichi, do we really have to do this now? Yep. It's alright. She's just looking out for everyone. Alright, let's hurry up and talk to the Pyro Archon so we can help the others. जल्दी जल्दी. उसका एक काम कर, लाइट कोन में जा, लाइट कोन में जा, लेवल अप मत कर मत कर मत कर मत कर भाई, मैं उसको नहीं कर भाई, मत कर मैं उसका लाइट वो छोड़, एक काम कर, उसके लाइट कोन में जा, लाइट कोन में जा. गेम ऐसी की तैसी, लाइव की ऐसी की तैसी. मावी का अच्छे से दिखनी चाहिए, ठीक है. भाई वो तो 3 लाइट कोन मेरे को उसके पहले ही मिल चुके थे. As you can see, things are not looking good right now. People across Natlan are in danger. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. So we'll have to keep our conversation short. That's alright, we're also in a hurry. We're gonna go help the Children of Echoes after this. We met the captain. What? Yep. लाइट कोन पे जा, ये थोड़े दिन पहले पुल किया था. So he thinks my plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. यार 5 स्टार मिलना कितना आसान है. सबका सिग्नेचर. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. The Gnosis does have that function, but there's more to the story. I will answer you honestly, but you must help me keep this a secret. I can use the power of the Gnosis to save Natlan, but it comes at a heavy price. Oh! The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net, which would surround the ley lines and protect them against abyssal corrosion.
does that mean? Yes. एक काम कर दानंग It means दानंग का लाइट फोन पे sacrificing जा those souls दानंग in पे the जा process. Souls are just another form बाद of में life. करता दानंग का The लाइट कौन quality पे of जा this method is ये मैं लाइट self-evident. को लेवल अप किया सिर्फ फेशाव के लिए लेवल 70 पे छोड़ दिया था भगवान पे इसके जाकर देख मैं प्लान्स कितना फार्म किया The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. दानंग पे जा और फिर रेलिक्स Using में the जा gnosis means converting all चलेगा। three into मैं material for the फेशाव के लिए net, प्री फार्म करके erasing रखा our था देख ले history भाई and culture. Even then, the net can still become corroded. If we cannot find a way to repair the damaged ley lines before that happens, then all those sacrifices are for nothing. Given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means for us in the end. Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Tibet. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro Archons had to account for the worst-case scenario. Having a contingency plan is our duty, not just to the people of Natlan, but to all who live on this continent. Oh. This has always been a well-kept secret. I'm very curious how the captain learned this information. टीम बता मैं यूगोंग यूज करता हूं ठीक है One more thing. The captain said he found another way to हाँ solve the समझ रहा हूँ problem. माँ वो किसी की शर्म कर ले Without the gnosis, यूगोंग के he should बच्चे हैं have तो no other थोड़ी शर्म option. रख But I see no reason for him to lie. राइडन पसंद है मेरी राइडन फेवरेट कैरेक्टर है उसके दो बच्चे हैं Seems like our only path forward is to track him down, so he can answer that question for us. यूगोंग का तो पति है यूगोंग का तो पति है क्या यूगोंग का तो पति भी है एक Judging by your expression, you must have doubted me, even if just for a second. वो छोड़ा कमल एक काम करना Not even a little. We would never. जो यूगोंग का पति है ना उसको तू शेवरोस की गन से उड़ा देना फिर तू उससे शादी कर Just लेना as बस खुश expected. I appreciate your sincerity. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple curiosity, but know this. No matter what, our goal remains the same. We both want to save the people of this land. So now that you have your answer, do you still doubt me? यार ओपिनियन चेंज करा देती है I भाई got a lot of guts, traveler. That's a good thing. Oh, and feel free to call me बोलूंगा Malika. मुझे yes, first name basis. I like it that way. Okay, that's progress. मेरे को जिंगलियो से नफरत है मेरे को जिंगलियो नहीं As पसंद है अरे इस साल बहुत में सालों और The गेंशन में मेरे को intelligence आलगी officers और we राइडर assigned to the Fatui should be back soon. We'll get our answer then. क्योंकि मेरे को एक्रोन पसंद है एक्रोन मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है नहीं पता ये इन लोगों को मैं म्यूट कर देता हूँ मैं एक काम करता हूँ इन लोगों को मतलब म्यूट नहीं करता एक काम करता हूँ इतना कम करता हूँ कि मैं ही ना सुन पाऊँ हाँ भाई कर ले हम लोग वैसे भी एचएसआर का बात कर रहे थे तेरे को समझ भी नहीं आएगा हाँ तो क्या हुआ था भाई एज फॉर द कैप्टन द इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वी असाइंड टू द फटूई शुड बी बैक सून विल गेट आवर आंसर ओके ठीक है Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss is attacking several locations at once, I'm confident the warriors stationed in those areas can handle it. Don't worry. I just need to finish coordinating our available अभी just manpower, first name then basis I'll पे आए take a हम small लोग team to handle the difficult भाविका locations. के साथ Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? Nope. That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and powerful warrior before I ever became the Pyro Archon.
भाई प्लीज माविका यूज करने दो गेंशिन. No matter how you look at it, my duty is on the front lines. I just think there's strength in numbers. If the people feel emboldened, that's just a bonus. Anyway, even if we respond to these threats in time, it's not a permanent solution in the long run. I've considered moving my people to other nations, but given their close connection to the Night Kingdom, a forced evacuation would have devastating consequences. I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlements. माविका का किट आने दो. Now I just need to find the right time to disclose the true nature of the crisis to the people of Natlan. Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that won't be the only response. In any case, that's for me to worry about. I'll let you know when we have more information on the captain. माविका तो मस्त पुल है मेरे को. मैं तो गारंटी में बैठा हूँ. मैं माविका निकालूंगा, 10 पुल करूंगा माविका कर बस. All right, we should head out. Maybe we can join up with Milani. She can't be too far ahead. Stay safe, माविका. अभी पुल्स भी सेव करेंगे. माविका के बाद फुरीना, फिर शी एन्यून. ऐसे तुम कहाँ दिख नहीं रहे. क्या बोला भाई? एक तो अकमल इतना धीरे बोलता है तो इसका आवाज फुल क्या फिर भी समझ नहीं आता. तेरा आवाज फुल है तो बहुत ज्यादा समझ आता है. हाँ तो थोड़ा कम कर ले, मिड ले ले. Shanyun for Diluc, yes. Shanyun and Furina. काम कर, बैक जा. जरूरी है ना शैन्यून और फुरीना तो, मतलब तभी तो टीम बनाऊंगा मैं. ओवर पावर डिलुक होना चाहिए ना. रेशियो तो मैनेज कर भी रहा हूँ थोड़ा बहुत. भले क्रिट मिस करता है तो क्या हुआ, प्लंज में थोड़ी ना करेगा. डिलुक 4 पीस क्रिट डैमेज वेपन 1077 65 211. ठीक है तो बनता है डिलुक के लिए. यहाँ से ब्रॉन ने निकाला 300 पुल करने के बाद निकाला मैं यहाँ से. मेरे को मिली नहीं कभी. हाँ मेरे को लगा करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ऐसा है देखो, अगर फुरीना निकल गई तो अच्छी बात है, अगर 50-50 हार गया तो भी अच्छी बात है. शैन्यून निकालूंगा, गारंटी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है. तो मतलब प्लान तो सेट है पूरा. Kachina, how many people do you have left? शैन्यून बाद में निकाल लेना. तू शांत रह. क्या भाई मर्जी है. डीलो तेरा बिल्ड नहीं, फिर भी तेरे को शैन्यून निकालनी. बेचारे को पुल से नहीं मिले सेक्टर्स लिए सुन के दुख हुआ. अच्छा नहीं मेरे को तो मिली थी. मैं तेरे को टीम्स बता था, वो टीम यूज कर. अच्छा तू दक्ष अभी क्या बोला था? मैं शैन्यून बोला, तू शिलोनेन सुना क्या? नहीं मैं शैन्यून नहीं सुना. तो तू ऐसा क्यों बोला कि बाद में निकालना? मैं क्या बोला, तेरा गारंटी है ना तो तू रिस्क मत ले. मावी का निकाल ले गारंटी. भाई माविका पहले ही आएगी तो माविका तो पहले निकालूंगा ही ना मैं. तो भाई भरोसा. अभी कौन बोल रहा कि 5.2 में शैन्यून नहीं आ सकती? आ सकती है वो. छोड़ो. हाँ 5.2 को आ सकती है. बाद में देखते हैं. अगर आई तो फिर. अच्छा कचीना की वजह से मेरे को लगा आएगा कुछ. There's a trapped caravan that needs our help. We need to rescue them as soon as possible. We'll go together. भाई ट्रैप्ड कैरावन मत याद दिलाया. डिलुक का बैक स्टोरी याद आ जाता है मेरे को. और क्या क्या है तेरे पास? नीचे देखा.
और कौन सा अच्छा होगा? तेरे को क्या हुआ? ओके, आई गॉट 2 न्यू कैरेक्टर्स। वॉल स्टार की बात हो रही है आई थिंक। अलग कैरेक्टर है। दिस इज गेंशिन इन द हाईएस्ट ग्राफिक्स। ओके, मतलब ये सबसे हाईएस्ट ग्राफिक है जो मेरा फोन सपोर्ट करता है। पेला रख, मैं बोलता हूँ पेला क्या है, डीबफ करेगी ना फिर। The wind knows me. अच्छा, तो मैं क्लाइम क्यों किया? कचीना और कनीच कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ पता है। यप, मैं रिसर्च करके आया हूँ। ना कॉपीराइट ना पेमेंट इशू, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उनका क्यूआर काम नहीं कर रहा था तो पेमेंट नहीं हुआ उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। Stay safe. अरे xilonen, अरे यस, बहुत सही। अभी लोग टीम बना के दिए क्या मेरे लिए ट्रैवलर के लिए? One, 2, 3, 4, 5 बाइक दिख नहीं रहा है, सॉरी। ये All right. चलो। Carving wave. Check this out. That's the launch. Amazing. Starfall. ओके, अमिताभ बच्चन की आवाज ना आई पेमेंट करते हुए। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। अमिताभ बच्चन की आवाज ना आई। I really thought I was done for. बाय बाय बाय, गुड नाइट। सोए नहीं होगे तो सो जाओ जाओ। I really thought it. I can't thank you enough. Don't worry about it. We're just glad you're okay. Let's see. कस्टम मेड पेमेंट साउंड बॉक्स बनवाऊंगा जिसमें डीलूक की आवाज आएगी। That should be the last abyssal pylon near the Children of Echoes. यस, आंख बंद कर लो अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो। I thought she would come with you. The Masters of the Night Wind also got attacked, so she went back to help her tribe. She said we can deal with the ancient name later. That makes sense. The attacks are more urgent. Alright, this isn't a good place to talk. Let's head back to the tribe. स्टोरी नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्कॉन क्वेस्ट ही कर रहा हूँ। ओके, मेरा नेट थोड़ा सा चला गया था। और तेरे पास एक्रोन की टीम है भी नहीं भाई, मत निकाल एक्रोन, तेरे पास एक्रोन की टीम। कल से शुरू करूंगा मैं। अभी आज आलस आ गया। मेरे को भी आ रहा था, मैं अभी सो ही रहा था, पता है। मैंने अपने आप को फोर्स किया उठने के लिए ताकि स्टोरी देख सकूं या फिर माविका को देख सकूं। सेम सेम। इस गेम की ऐसी की तैसी भाई एक्रोन तेरे पास उसकी टीम है भी नहीं, मत निकाल दिया। मैं सबर कर रहा। गेंशिन में एक्सेप्ट आर्कॉन को बहुत के Looks like a few people were hurt after मैं all. सब कर रहा। गेंशिन में एक्सेप्ट आर्कॉन को बहुत आलस आ रहा है। ओके, फार्मिंग क्यों ही कर रहे हो? प्री फार्म करो, माविका निकालो। आप भी कैसे कल्चर्ड बनो। The abyss threw a lot at us at once. I rushed out as soon as I heard the alarm, and there were already so many monsters. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors, and just like that, we destroyed several pylons as a team. एक सेकेंड। I wasn't in charge or anything, we just happened to be together, okay? Still, I think this proves that camping in the wild was a great idea. That's how we were able to respond so fast, okay?
शॉर्ट्स बॉय सोता नहीं है लेकिन वापस आ जाता है। भाई हो गया भाई, खत्म अब। शॉप में जा, एक काम कर, शॉप में जा अकमल। ओके ठीक है। नहीं ठीक नहीं है। 320 रखा है, किस खुशी रखा है? क्या आपको लगता है, मैं ना तेरे को सही बता रहा हूँ शॉर्ट भाई, उल्टा सीधा अगर लिखा ना तेरे घर घुस जाऊंगा मैं। मत निकाल उसके पास। You mean the situation in the Night Kingdom, right? Yeah, I feel the same way. We've managed to keep it a secret all this time, but more and more people are realizing something's wrong. अबे यार साला सर्दी कैसे पकड़ गया मेरे को? अभी तक खांस रहा था, अब सर्दी पकड़ लिया। वाह। ओके सर भी दर्द हो रहा है। ये तू अलग ही पागल है भाई, कसम से क्या बोलूं। तू एक कैरेक्टर के पीछे बस पड़ चुका है भाई इस गेम में, इसके लिए तू तेरे एक भी कैरेक्टर ढंग से बिल्ड ही नहीं है। मेरा एक भी कैरेक्टर इसलिए ढंग से नहीं है क्योंकि मैं साल में एक बार खेलता हूँ। एक काम कर, अपना आईडी पास इधर दे दे डिस्कॉर्ड में, मेरे को पर्सनल पे भेज दे, मैं तेरा अकाउंट तेरे को 3-4 दिन में अच्छा बना के देता। क्या लिखा है? क्या आप लोग को लगता है कि नहीं? यस को कह रहा था यो यो बूम। क्या अबे नशेड़ी। It's impossible not to feel anxious when things are getting worse by the second, and all we can do is wait. सुन ले बात पहले, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि तीनों टीम बिल्ड्स होगी। मैं एटलीस्ट तेरे को दो टीम की मैं गारंटी लेता हूँ। शॉर्ट में तू डिले में चल रहा है क्या? That just means we need to buy the Pyro Archon more time. Keep pushing, everyone. Every battle is worth something. काम करना भी मुश्किल होगा। ब्रेक इफेक्ट एक्चुअली ज्यादा हार्ड है, क्रिट से ज्यादा हार्ड है, और फायरफ्लाई यार कैरेक्टर है। मेरे को नहीं लग रहा ये होने वाला है कुछ मेरे से। मैं तेरे को जिंगलियो और सीला की टीम बिल्ड करने का गारंटी देता हूँ। You really are an eternal optimist, Milani. You always find a way to cheer people up. ऑप्टिमिस्ट का मतलब कुछ और होता है वैसे। फाइन लाइन ढूंढना ठीक है। I guess it's one of my better qualities. मैं बाद में देखता हूँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। सबसे पहले तो मैं तेरा सीला का टीम बिल्ड करूँगा, तो तू ओके कैप्टन भाई इतना लीक क्यों कर रहे हैं भाई? लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती, सच में सबको बता दी। The Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. And somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon, and calls her out for having a solution but refusing to use it. Honestly, if he has the same information as us, I can't really blame him. We talked to Malika before we left the stadium. According to her, the cost of the captain's plan is too high. And, well, it makes sense. If that was truly the better choice, she would have picked it. अब मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे को तो लगता है कैप्टन सही है। ठीक है, मतलब ठीक है, माविका ऑब्वियसली सही है, माविका है क्योंकि, और मेरे को लगता है कैप्टन भी सही है। Yeah, I trust the Pyro Archon. मेरी ओपिनियन है। When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient with me. क्या बोलूँ मैं? कंसर्न सुनाई देता है मुझे। मेरा चार्जर का वायर क्या कर रहा है बे? Plus, she burned down all those precious mementos for Kachina. She's already proven how much she values even a single person's life. शॉर्ट बॉय पागल हो गया क्या? When it comes to Natlan's survival, there's no way she would hold back.
I agree. Maybe the captain weighed the costs and came to his own conclusion, but I'm sure we have different priorities. Life is important, but so are history and memory. As the Archon, she can't tell us everything, but it seemed like she wasn't holding anything back this time. मैं पागल हूँ, अरे भाई ये सच में पागल है. The next question is, if the captain found a new way to save Natlan, how come the Pyro Archon has never heard of it? Why would you want to save Natlan? Yes. कचीना पहली बार जिंदगी में सही सवाल पूछी है. क्यों? This is all super confusing. बीटी ऑफ हो गया शायद. क्या? चल ठीक है, कुछ नहीं. क्या ऑफ हो गया बीटी? अच्छा तो मेरे को लगा मेरा कैसे ऑफ हो सकता है. मेरा तो बैकअप ही देता है. 40 घंटे का 60 घंटे का बैटरी बैकअप बॉक्स में देता है. और अभी कितना हो गया? 3 घंटा हो गया ना. अभी 20% गया है टोटल बैटरी बैकअप की तो बात ही कुछ और है मेरे. We still don't have enough information. Once we figure out what the Fatui are doing, we'll have our answer. Let's head back then. Moika said her intelligence officers should return soon. Okay. With how many Fatui there are, someone's bound मालिका to का give इंटेलिजेंस something ऑफिसर away. कौन है? उसका वेपन क्योंकि कभी दिखता तो नहीं है. अच्छा मेरा भी बीटी नहीं है, बट लेफ्ट साइड तुम्हारी वॉइस आ रही है एंड गेम की तो दोनों में आ रही है. हो सकता है, पता नहीं. एक सेकंड को लेफ्ट साइड बस आ रही है ना. चेक करते हैं. मतलब अगर ये काम करता है तो ठीक है. Sounds good. अब बताना I अगर have a चेंज few हो तो theories कुछ. of my own. With a bit more information, we just might get to the bottom of the whole thing. Nope. I was just about to ask. नहीं. Count me in. I'll do it. If I was just a bit faster, we could have prevented a few people from getting hurt. People who could help us in the next battle. Okay. It's all a chain reaction. Let's go register right away. It should take long. Everyone's looking for. Okay. Register? अभी दोनों में आ रही है. I'll just follow you around. You know, Hacker go है where भाई, you hacker go, है. do what you do. एक सेकंड. दीदी कुछ बोल रही है क्या? मैं इसलिए दोनों में लगा था. कोई ना कोई मेरे दरवाजे में आ ही जाता है. सीआईडी बन के, दया बन के दरवाजा तोड़ने लगते सारे लोग. Okay, but then you have to follow my order. ये देख रहे हो? You got it. I just don't want to make the trip back. It's so far. All right. See you all later. Let's get together and celebrate once this is over. Oh, you betcha! Dorian, जाओ जाओ. बता भाई अपना क्या करना है, पुल करना है कि नहीं उसको. नेक्स्ट Akron, Janhang,
रैपा और भाई HSR ही चला दो, उससे अच्छा तो। अबे दक्ष, मैं क्या बोलता हूँ, तू जब तेरा पीसी आएगा ना HSR लाइव करना तू। एक सेकंड रुक जा। क्या बोल रहा है क्या? शॉर्ट बॉय को शॉर्ट डलवाते हैं, मैं लाइव कर लेता हूँ, तू HSR कर लेना। हाँ बिल्कुल भाई, इसका अकाउंट सुधारने की कोशिश ही कर रहा हूँ मैं। हाँ अभी तू मेरा भी सुधारेगा बदरिंग का, तू तो पता नहीं क्या मर ही ना जाए। भाई मेरे को आदत है, मेरा पेंशन में 4 अकाउंट है, ग्राइंड करता हूँ मैं चारों अकाउंट में। Are you okay, Koichi? क्या हुआ? I'm fine. No need to worry. थर्ड वाला HSR मेरे को जुकाम है शॉर्ट बॉय, मत कर मेरे से ये सब। They ran into the Fatui while out on a mission and decided to follow them. बता अकमल, तू बता। माविका का बैग ठीक है। Calm down and let me explain. Here's what happened. तेरे को एक हीलर चाहिए अभी बाहर है। हाँ देना चाहता हूँ और कैन लाइव है, मैं उसकी वजह से गाली नहीं दे रहा। भाई तेरे को मैं मजा आ रहा है ना शॉर्ट बॉय? समझ मेरे को भी। पुल मत कर, बाहर से पुल मत कर, तू जा कैरेक्टर में जा। सुन तू कैरेक्टर में जा, अपना अबंडेंस कैरेक्टर दिखा मुझे, सारे अबंडेंस कैरेक्टर दिखा। रुक जा, मेरे को ये देख वो बाद में देख, पहले मेरे को दिखा भाई सारे कैरेक्टर्स, मतलब आपने गलत काउंट कर रहा है। मजा आ रहा है नहीं? क्या दिखाने की बात कर रहा हूँ? देख तू क्या बोलना चाहता है। कुछ नहीं, कैरेक्टर्स दिखाने की Watch बात out. हो रही है। It's the Fatui. अरे भाई तू ग्राफिक्स हाई क्यों खेलता है पहली बार, मतलब मीडियम ग्राफिक्स जो भी है तेरा, क्यों ग्राफिक्स बढ़ा के क्यों खेलता है? भाई क्या चल रहा है ये? रोज पे खेल, मजे कर। 3-on-3 बैटल चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये? अच्छा 4-on-3 है, सॉरी। Were they attacked by the abyss? No, wait. It looks like they're protecting a group of travelers. Over there. Okay. Do you see? You're right. That's a traveling group from Natlan. Could they be trading for something? Let's keep observing for now. Okay. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your journey and seek shelter at the stadium of one of the tribes. मतलब स्टेज नया नेम है तो 12 नो सब वॉवेल्स में प्रोनाउंस हो जो भी। Thank you so much. I wish there was something we could give you. We don't expect anything in return. We were out on a mission and saw you being attacked. It was our decision to help. If you truly wish to repay the favor, you can keep this a secret. If anyone asks, just say you were saved by warriors from Natlan. Okay. Oh, okay. We can do that. But इसका नाम क्या है इस लड़की का? We're not asking you to cover up our activities. We haven't done anything illegal. Our captain simply wishes to remain undisturbed. Nonetheless, the decision remains yours. If we wanted to keep you quiet, we would have employed a harsher method. धमकी दे रहा है। 12-9 धमकी देता है। Got it. We'll get going now. did you hear that? They mentioned a captain. Isn't that who the Pyro Archon is looking for? Exactly. We could be onto something big.
देखो ठीक है, उनके ग्रुप का कैप्टन भी कोई और हो सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी बार बार कैपिटानो को बीच में ला दोगे। There was no trade. They were just helping people in need. I didn't sense an ulterior motive. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. But based on what we just saw, it's possible he was telling the truth. मेरे को भी कैप्टन के साइड हूँ मैं तो। Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time. Not It's too early exactly. to say. Let's follow them and see what's really going on. मेरे को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, हीलर वगैरह सपोर्ट वगैरह मेरे को बढ़िया उनकी आवाज तो है। नहीं भाई, सुन स्टार्टिंग में मेरे को भी जब बाइदू मिली थी ना, मेरे को So this is where they were headed. Koichi, wait for me here. I'll go in and check it out. Oh, no you don't. How are you planning to get through all the guards? Look, I can use this terrain to my advantage. With our tribe's special way of getting around, I doubt they'll see me coming. We still can't see anything on the inside. What if you can't find cover? You won't have anyone to watch your back if you go in alone. The more heavily guarded the location, the more valuable the secrets. Even if the captain isn't here, we can still figure out what the Fatui are planning. 5-star लोग होते ही है भाई एटीट्यूड वाले। Fine. You're not gonna listen to me anyway, so let me come with you. That's even more risky. You've been running around saving people for days. You're already at your limit. I'm confident I can protect myself. I'm not sure you can say the same. At least right now. I can. You really believe that? Yep. Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout all on your own sounds more reasonable. You know, growing up, even if I insisted on doing something, it never gave you any trouble. I'm not sure you can say the same. All right. If we start arguing, this will never end. We can't let this opportunity go to waste. Guess that means I win. Don't worry, you're not the only capable young person from our tribe. I can handle this. All right. Same plan as usual. We split up, communicate with hand signals, make sure our blind spots are covered, and support each other once we strike. Okay. Got your ropes? Yeah, let's go. Heck on. Okay. The Fatui have eyes all over this place. I should wait for Koichi's signal. Koichi. इन लोग स्पेलिंग अलग लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, लोग पागल है क्या भाई? Koichi. हाँ यार। Okay. Oh, okay. Signal. Gio. भाई मेरे को कुछ करना है क्या यहाँ पे? Spider-Man. अब. Not sure how many chances I'm gonna get. I need. Okay. Good. I made it without getting caught. I should get to that platform over there. But it's guarded by the Fatui. Koichi should have line of sight. I'll wait for her signal. पेड़ से गिर गई मत बोलना प्लीज, गलत हो जाएगा वो। अरे बाबू
क्या? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा देख लेगी, कोई ना। It's no use staying in one place. I should keep moving. ठीक है, मेरे को पता है तो कुछ बेवकूफ़ी करने वाली है। Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. मैं उसका लाइट को S3 करने ही नहीं वाला, मेरे को जब और 2 मिल जाएंगे ना Okay. सीधा S5 करूंगा। Time to move. E0 S5। हाँ क्या? That was close. Almost got caught. Probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. Now's my क्या कर chance. रहे हैं? गिर जाएगी। ओ स्पाइडरमैन। I made it! That'll show my sister. Let's see. The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get past them somehow. Wait, I've got it. क्या ये? So the mysterious sour spear के जो भी है। क्या था क्या ये लेकिन? ओके, एम अच्छा है बाय द वे। अरे बेचारा। Huh? What's that noise? Did something explode? Oh, it stings! Voice over. What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing! Good, they're arguing. Looks like they just needed an excuse. They've probably had enough of this job already. The people on the hill over there left to help their comrades. This is our chance. Good job. Come get me, Chaska. I hope she gets this hand signal. That's Koichi's signal. Smart idea. All right, time to move. Give me your hand, quick. जल्दी। I checked, and this way is completely clear. It should lead us to the deepest part of this place. Okay. मैं समझ गया कि इतना लंबा क्यों है ये क्वेस्ट, पता है? एक साथ इतने सारे पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं ना हम लोग को। अच्छी बात है वैसे तो। Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work with me. Not my own sister, though. No, she avoids me like her life depends on it. I was wrong, Koichi. You've done well. Wait, you're just gonna admit it? Now I look like the mean one. Let's focus on the task at hand. We're in the heart of enemy territory. The more time we waste, the more dangerous this becomes. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll drop it. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. I doubt it's because they're interested in our culture and history. It seems like they're looking for a dragon relic called the Source Mechanism. The device is ancient. Barely any information survives to this day. And even people from Natland don't know how to use it. Why would this be the Fatui's target? Not bad. Looks like it's in good shape. This should be what our Lord's looking for. कौन है भाई तुम्हारा लॉर्ड? Took us long enough. Come on, let's get this thing back. कैपिटानो को लॉर्ड भी बोलते हैं? Back? ठीक है। Back where? Should we keep following? You really want to keep going? Of course. We make a good team, don't you think? No reason to stop now. What was that sound? चूहे। We've been spotted. Time to go. Falling rock incoming! Watch out for your gadget! हाँ। What?
You'll regret that! After them! ठीक है. Pretty average. इनकी अल्टिंग ही खत्म नहीं हो रही अभी तक. Once we got them off our tail, we went back to observe some more. They'd collected several identical pieces of something. It looked like they were waiting, though, so we decided to come back. So, Koichi got injured trying to get them off your tail? She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium. Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? So my perfect record remains. You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not my place. I know. I'm already reflecting on my actions. So, our current intel suggests the Fatui is after the source mechanism. The device is a complete mystery, even to us. What does the captain want with it? I have no idea. But it's safe to assume the device could serve a similar purpose to the Gnosis. xilonen, yes. I Okay, need you ठीक to है. gather every scholar in Natlan familiar with the secret source. फारूज़ वन को बुला दो. मतलब ठीक है, I'll नेटलैंड get से right नहीं तो on क्या it. हुआ? Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for you to get some rest. Oh, and there are gifts from your patients waiting at the speaker's chamber. Okay. I've prepared a small gift of my own as a token of gratitude. I'll send it to your home along with the others. My patience. That's so nice of them. Guess that means I'm doing something right. You don't need to give us anything, Archon. We were just doing our duty for Natlan. I should take Koichi home now. Koichi. Well, if Koichi doesn't want her favorite Saurus crackers, then... Okay. I accept. Thank you, Archon. What am I gonna do with you? There's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too, so don't be shy. I'll start investigating the source mechanism right away. If I learn anything, you'll be the first to know. Yes. स्नैक्स की तो पड़ी है पाइमोन को. प्लीज. हाँ, अभी नहीं. एक्ट अभी नहीं खत्म करना. थोड़ा बहुत और चाहिए मेरे को इन्फॉर्मेशन. पता नहीं भाई, वो SSR को पता कब लाएंगे वो. ठीक है ना, अभी मतलब टाइम है ना थोड़ा. हाँ. चालू का. तो मैं दीक्षा. मुझे लगता नहीं 80 पुल्स हो गए. नहीं हो सकता है मेरी, कि अभी सेकेंड हाफ चल रहा है ना, तो इसके बाद एक और फर्स्ट हाफ में वो आएंगे रैपा और डानहांग. सेकेंड हाफ में एक्रोन है, तो तेरे पास 40 दिन पड़े, नहीं 30 दिन पड़े, मे भी हो सकता है. Time to go. हाँ, तो तू लास्ट दिन पे एकदम लास्ट दिन पे कर सकता है अगर तेरे पास पुल्स हो तो. अगर नहीं हो भाई नेटलैंड का 80% एक्सप्लोरेशन पहुंचाना है, बताओ. गारंटीड एक्रोन से पता कर रखना बोलता हूँ. क्योंकि जीता अपनी बात लिंक चेक बहुत ओपी हीलर है, बेस्ट हीलर है अभी के टाइम में गेम की, तो अच्छी बात. अगर हार गया तो एक्रोन गारंटीड रख. उसके लाइट को के लिए पुश लगा दो. लाइट को के लिए तेरे को थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे.
80%, 90%, 78% और 60%। टोटल कितने परसेंट करने हैं मेरे को? 23। मुझे ना ट्राई करने, मेरा वो गुडराइट इक्वल लेवल 80 पे पड़ा है, वो एक्रोन पे यूज करके तो खुद देख ले कितना डैमेज का फर्क आता है। डैमेज का फर्क तो आएगा, मतलब हर एक सिग्नेचर कैरेक्टर में, ऐसा नहीं कि कैरेक्टर एकदम अनयूजेबल है। एक्रोन है, एक्रोन अनयूजेबल है बिना सिग्नेचर के, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे पता है। Yeah. Time to go. Okay. उसके बाद है सिग्नेचर की नहीं है। What's next for you two? I'm taking Koichi home, with our parents there to keep an eye on her. I can make sure she actually rests. Hey, it's not like I'm some kind of prisoner. I'll be fine in a day or two. There's no need to go all the way home. यार इतना एक्सप्लोरेशन कहाँ से करूँगा? ठीक है, मैं स्टोर वाला तो पता है, ज़्यादा कुछ किया नहीं वहाँ पे, तो शायद मिल भी जाए। 140 तक मार सकती है, 140 के। बट अगर मल्टीपल एनिमीज पर टाई करेगा 2 या 3 लाख मिनिमम आराम से। ठीक है, शायद हो जाएगा एक आध घंटे। What if the abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel, you're not going to rush out the minute you hear the alarm? I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Fine. On the off chance something like that were to happen, I might. But I'm a doctor. I have a duty to help people in need, no matter how hard or tiring the work gets. I guess you're right. But I don't have to like it. This reminds Paimon of when we first met. Except you were the one trying to stop Chaska from doing something dangerous. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get hurt because of a rash decision. Then try to see things from my perspective. You clearly want to protect your patients. So can't you understand why your own sister would feel the same way about you? The two of you are the same, you know? I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. Who wants to be like her? Overconfident, always making excuses when things go wrong. That's just not true. You think I don't have proof? Okay, don't get into another fight. Just pretend Paimon never said anything. Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Neither of us really takes it to heart. Plus, I guess we are similar in some ways. Maybe I rush into things without thinking, but I learned that from her. We're family. I can't help it if my older sister is a bad influence. Okay, you don't have to put it that way. सच है लेकिन So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down, so we'll always have our differences. But still, we get along in our own way. Plus, I know you'll wake up one day and realize I was right all along. I just need to wait. Exactly, मैं सोचता हूँ, पता है यही चीज रोज। Be my guest. Come on, let's get you home. See you later, traveler in Paimon. I'll be back once everything's settled at home. 50 रहेगा तो चलेगा। 20 यूज करूंगा मैं, पर ट्राई करता हूँ। See you later, alligator. Take care of yourselves out there. Those two will probably make up for real at some point, right? Well, we've learned a lot. Let's go over everything that we know so far.
जल्दी स्किप कर देते हैं आजकल ब्लैक स्क्रीन टेंशन। शीतला लाइक Sorry for popping up out of nowhere again. Why do you look so awkward? Oh, is there something you need from us? Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. I'll treat you to some charcoal grilled steak to make up for it. Awesome! Just give us your orders! Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. Remember what we talked about before parting ways? Oh yeah, you mentioned how Auroron has always wanted to save Natlan, and something about his soul being fragmented. Yes, Paimon okay. and the Traveler discussed it after you left, and we think Auroron is probably back with the captain. What do you think? I agree with your hypothesis. And just now, I confirmed it myself. Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. What? Okay. He came back? I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away from success, so there's no way he can back out now. Apparently, he came back to fulfill his duty to our tribe. When he left, he said it was because he still has a duty to Natlan as a whole. I'm not surprised you let him go at all. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the same time. Plus, he was on guard. He knew I would try to go after him, so he made sure to keep his distance. I kept an eye out for a good opportunity, but it never came. Auroron मेरे ख्याल से लोकी वाला वाइब देता है मेरे को, पता नहीं क्यों। बस वो बात लगे ज़्यादा अच्छा एक्टर है Auroron। All these years of calling me Granny, and I couldn't do a single thing for him in the end. Don't say that! Your tribe all raised him together, right? That couldn't have been easy. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe, dropping by random houses right and left. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only natural for a child to want to do something for their family. Besides, Auroron is my apprentice. He might have a few tricks up his sleeve, but I guarantee I know every single one. Wait, what are you saying? Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable. And this gem is what makes the talisman work. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. मेरे को जानना है ईफा कौन है? You guys know Aoife, right? No? Nope. Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things, and he happens to be very good friends with Auroron. कौन है? Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. Auroron would find the gem as soon as he opened the bag. He knows how important it is, so I knew he would make the switch. क्या हुआ? तो तेरे को इसका घर पता है ना? नहीं पता? He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment he touched it, a portion of his memories were copied onto the old gem, which he no longer needed. That's amazing. You can do something like that? Most people can't, but I can. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, तू भी बोल रहा था the दक्ष? whole backup of Auroron's memories in this gem. दोनों कान में ईयरफोन लगाए, ठीक है? The
kid thinks he can take me on? बता ना भाई Like क्या I हुआ? wasn't the one who taught him everything he knows. करूँ इस बंदे का बता तू किस बंदे का? ये जो बैठा है अभी हमारे बीच अकमल। और कौन क्या हुआ क्या? That's amazing, इसको Seawawi. आर्लकी ने पुल किया फिर बोलता है कि आर्लकी ने पुल करना रिग्रेट करता है और वो एक मेटा कैरेक्टर है सेम होंका स्टार में भी जो भी कैरेक्टर मेटा है ना वो बोलता है मेरे को ये Once we get to the bottom of this, we can finally track him down. बोल रहा है एक्रोन मेटा नहीं है एक्रोन की बात ही नहीं कर रहा मैं फायरफ्लाई की बात कर रहा हूँ लिंक भाई मैं नहीं सुन रहा तुम लोगों को अपना अपना करो तुम लोग I know he thinks of me as his grandma, but do you think he'll get mad at me for this? You can be honest. That's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago, and now I'm useless again. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. And then start crying. Yeah, you're right. First anger, then tears. Oh, wait! Who are you calling a crybaby? You're just making it worse, traveler. I need to look at his memory. Even if he resents me, refuses to see me, or runs away for good, I don't care, and I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their own. You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Did you just say you'll come with me? Please पाइमन पहले पूछ लिया कर ऑफर करने से पहले हेल्प. Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right, we need raids on the Fatui. You really mean it? Fine, you can come. Just promise me you'll see this through. No backing out. Got it? Don't worry, we're professional adventurers. Then I place my trust in your professionalism. All right, time to sneak into someone else's memory and engage in some unwanted spying. Unwanted spying. You heard it here first. I wouldn't be doing this if I had any other choice. Are you ready? Are you ready? बापरे 7000 का डैमेज तेरी स्किल से इतना ज्यादा कैसे दे रही है डैमेज मुझे टिप्स एंड ट्रिक दे ना थोड़ी नीचे लोडिंग वाला वो भी चेंज कर दिए देखो बॉटम लोगो 10 घंटे लग रहे यार रुक मैं कुछ अच्छा सपोर्ट कैरेक्टर ही लाता Look how good you're doing. You'll grow into nice big radishes in the future. सोलो ट्राई करना नाइडा उगा रहा है. And you? Eva says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. What do you think? Hey! How's it going, Auroron? Good. How are you, Uncle Okanbi? Can't complain. What you up to? Naming your vegetables again? No, just some idle conversation. Sounds fascinating. What did they say? They told me you were coming and that you would take some produce with you. Only if you're offering. By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's fostering a saurian at his place. Said the thing trampled over a part of your radish garden. I hope you two didn't get into a huge fight. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. You really knew I was coming. That's pretty amazing. Light up the smoke and you can see the path through the shadows. That's what everyone says. Hey,
Have you seen that strange group of people that just appeared out of nowhere? Appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. It seems like they're looking for someone, but I wouldn't go around asking too many questions. If you run into them, be careful. You're from the Masters of the Nightwind, are you not? Why do you live here alone? I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui, the one everyone's calling a big deal. Not an inaccurate description. I'm looking for someone who may be known to you. TITTLE is her name. Heard the name. You have business with her? There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek answers elsewhere. Oh, he could tell I was lying, and now he's leaving? He gave up just like that? Hey! At least tell me why you're looking for TITTLE. It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। अबे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, गेंशिन गेम अंदर बता रहा हूँ। I've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some sort of invasion. The situation has seen no true improvement. The Pyro Archon did not fulfill her promise. My lord! Ignore him. He is no threat. भाई बेइज्जती कर दिया, देख लो। He knows I'm following him, but he doesn't seem to care. He's strong, I can tell. But there's something unusual about him and also familiar in some way. I can't describe it. What is it? My lord, A ley line disturbance. Certain presences have been forced to wander outside their rightful realm. That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he know that? Is he sending those escaped souls back into the ley lines? भाई reveal हुआ है भाई. How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. This could be related to why he's searching for Granny. A big reveal. I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant and continue to gather information. The Abyss could attack at any moment. If you notice any irregularities, assume drill formation and be prepared to fight. कितना अच्छा आदमी है भाई. However, there's no reason to over-engage. Information is our first priority. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? Do they really mean us no harm? Okay, ये वाला सीन तो पता है हम लोग को. Following him this whole time and still they ignore me? Do they really not care?
It seems like his subordinates referred to him as अच्छा ये फ्लैशबैक है ना, इसमें पता चल जाएगा कैप्टन और इसका कन्वर्सेशन वाला. And now he's headed to the stadium. That's unusual. What is he gonna do? You two, with me. Everyone else, wait here as instructed. Send word to the other teams to retreat immediately if this fails. Yes, sir. He's going inside? But the Pyro Archon is in there. What does he want with her? Forgive me, my lord. Allow me to check one more time. Do you truly wish to do this? The time for idle observation is over. It now falls on me to act. This nation is out of time. Yes, sir. He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? Yes. They're both incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top? Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines. It's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming from? Okay. Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. I can't let that happen. एक कट सीन प्लीज. एक कट सीन. अरे बहुत टाइम हो गया. एक कट सीन दे दो गेंशिन. बहुत टाइम हो गया. नहीं दे रहे. वाओ. ठीक है. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time, and you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here. ये क्या है? No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. अभी भी नहीं समझा मैं वो बात किससे कर रहा था. I didn't expect you to intervene at such a critical moment. You know I've been following you. Why didn't you stop me? When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast has the courage to come out and बेइज्जती fight. करने लगता है बात-बात पे तो. And yet, one of those very beasts saved your life. बेचारे का ईगो हर्ट हो गया. अब इसका भी ईगो हर्ट हो गया. Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. I don't know what the Pyro Archon is planning. Can she really save us? Maybe. पता नहीं भाई. The questions you asked her just now, well, I've had very similar doubts. So I felt like I had to help you. So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision to make. I'm not sure you realize that. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was likely all it took for her to recognize my tribe. कैपिटानो का बैक स्टोरी का जस्ट मिल चुका है मेरे को बस. और कुछ नहीं चाहिए था इस पूरे आर्कॉन क्वेस्ट से. बाकी अब माविका क्या करेगी वो जानना है. So,
We're in the same boat. You seem to care little for my thoughts on the matter. It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking for xilolen? Do you know her? Explain your relation to her first. I know you two are acquainted. It was obvious the moment I mentioned her name. xilolen is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my duty to protect her. Okay. If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. Yet, you chose otherwise. Do I really need to tell you what that means? I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish with my own two hands. You're stranger than anyone I've ever met. But maybe, just maybe, you can show me the way. Strange? Wow, pen ho gaya. xilolen is said to be the legendary Granny TITTLE, someone capable of communicating with the Wyab, and the Wyab are the key to information on the Night Kingdom. Why do you need knowledge on the Night Kingdom? That is not something you need to know. Don't forget, I saved your life. Do you not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul, a sense of justice. You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. You are more capable than I imagined. Acceptance. Let's go. Grief हो रहा है We'll see if you have what it takes to join my plan. मैं कितना फ्लैशबैक होने वाला है यहाँ पे? कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। कौन सा सीले को कर रहा है अभी? हाँ, कोई नहीं छोड़ा। हाँ हाँ। बाप रे, मैं कितने दिनों से BGR नहीं खेला हूँ। I see. Interesting approach. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem by reconstructing the ley lines themselves. अयो, ये तो एक्सट्रीम मेजर्स में जा रहा है खुद। ठीक है, दोनों के जो भी लोग अपने ले रहे हैं अपना, क्या बोलूँ, मेजर्स बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, इन दोनों का तरीका गलत है मेरे हिसाब से। अब लास्ट में खिचड़ी बनेगी, जैसे शॉर्ट बॉय बोलता है कि पहले खिचड़ी बनाओ फिर उसके बाद पुलाव बना ही जाता है, वही होने वाला है यहाँ पे। Traveler, Paimon, are you two all right? Paimon's fine, just, a little dizzy. Of course. I'm so mad at him. After everything, he still can't let go of the past. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous fool. Where's that gonna get him? Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. Maybe stubbornness runs in the family. Like grandmother, like grandson, as they say. Wow, what a saying. Is that supposed to be a compliment? That kid's got nothing on me. Anyway, back to what we just saw.
I don't even know what. Yeah, the captain seriously wants to reconstruct the ley lines? 125 plus What does that even Bhai. mean? Something like the loom of fate, maybe? Yes, yes. How does it help with the abyss? सुमेरु में करके बैठे हो तुम लोग, क्या तुमको और क्या जानना है? The loom of fate? ले लाइंस रिक्रिएट किए थे ना वहाँ पे. It's kind of hard to explain. Basically, it's a device from Conrio that has unbelievable power. Anyway, if he really wants to manipulate the ley lines, everyone in Natlan will be affected. Oh, this is big. सोना चाहिए मेरे को फिर 4-5 घंटे में उठना भी है. Which means the captain has been honest from the very beginning. Auroron's memory proves that. Why is he so obsessed with saving Natlan? Oh, we've got to tell Moika about this right away. Yes, she needs to know about this. Now. खत्म हुआ भाई लगता है क्वेस्ट. ओ फाइनली खत्म हुआ. हो गया खत्म. एक्ट 3 खत्म हुआ है अभी. वाह. और कितने एक्ट बाकी है? ठीक है, अब ये कल करते हैं. हाँ, तू दक्ष कुछ बोल रहा था? क्या चीज से ज्यादा? हाँ, लेकिन नेटलैंड में है भी तो ना इतना सब चीज. पूरा स्किप मारा था और तब जाके मेरे को इससे थोड़ा कम टाइम लगा था. नेटलैंड का भाई बिना कितना टाइम लग रहा है. अभी भी बचा है. कितना एक्ट बचा है? 2 या 1 बचा है. 2 बचा है शायद. और ये एक्ट 3 है नेटलैंड का भाई. अरे मैं चैट कब से देख ही नहीं रहा था. सॉरी, वो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा था. पता नहीं क्या हो गया था. ट्रेलर में भी ये देख के आई वाज कंफ्यूज कि अभी फाइटिंग अलोंग साइड अस. हेलो पार्टनर जी. अच्छा, फिर से इसको बैन देना भूल गया. डीसी पे मूड किया है क्या? इसे आवाज नहीं आ रही है. कहन तेरी बीवी का है तो का कृषि मत. तेरे को बैन दे रहा हूँ शॉर्ट बॉय एक और बार. है ही नहीं अभी. ठीक है, अब नहीं होगा ना. ठीक है. किटकैट नाइट बोर्ड चैट तो देख लो भाई. चैट हेलो. अभी कोई है? 1 मिनट. सॉरी, बहुत देर से मैं देख रहा था चैट नहीं मूव हो रही थी तो मैं सोचा हुआ होगा कुछ. चैट नहीं कर रहा होगा कोई. सब बैठे होंगे, सो गए होंगे. अभी पता चला चैट रिफ्रेश नहीं हो रही थी. ठीक है, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते. अब जो हो चुका है वो हो चुका है. ठीक है, ये अलग ही घटिया इंसान है. नहीं नहीं नहीं, थका दिया लिखते लिखते भाई. मैं रुक जाओ, अभी जाके पढ़ता हूँ क्या क्या लिखो. ठीक है, स्ट्रगल तो मैंने किया आज. हाँ, तुम छतिया हो. चुप चुप. अकेले से हो गया स्ट्रीमर. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. ब्रो भूल गए क्या स्ट्रीम कर रहे? कोई चैट पढ़वा दो इसे. अरे तुम्हारा तरीका गलत है. चैट तो पढ़ो भाई. स्ट्रीमर एक्शन गेंशिन मेरी चैट की. अरे माँ की जाए, कुछ काम कर ही नहीं. ऊपर क्या पढ़ोगे? ठीक है, वही पढ़ रहा था मैं. होता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, मजा आ रहा था स्टोरी में. This scenery is wonderful. क्या पता आती भी तो भी नहीं पढ़ता Surely मैं. enough to convince हाँ, anyone. अंदर तो नहीं जाऊंगा अभी. ठीक है. ओहो, अच्छा दक्ष, तेरे को अपना जीमेल दे रहा हूँ वाला. ठीक है, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं. बदरिंग वाला. पर्सनल एक्सेप्ट किया ना मैंने तो डिस्कॉर्ड में. जीमेल स्ट्रीम पर लीक मत कर देना. अभी मैं अपना अकाउंट को शिफ्ट करूंगी. लोल यहाँ पर देख ली मैंने. हाँ कर देना. अब क्या ही बचा है.
वो बात अलग है, थोड़ा बहुत खराब हुआ होगा एक्सपीरियंस, क्योंकि बैठे हुए ना HSR वाले। कल भी मत देखना बोलता हूँ मैं तो, अगर स्किप मारना चाहते हो तो मतलब जो भी स्किप मारना चाहता है वो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दक्ष तू कल फिर मत आना। कल फिर मैं आऊंगा। कल की भी पहले आज कुछ पहले खत्म कर रहा हूँ, फिर तेरा लाइव मुझे नेटलाइन स्टोरी ओपन करना, सारी मुलानी कनीज कचीना वाली मैंने स्किप कर दी थी, तो एक्सप्लेन कर देना यार कौन। ठीक है, मुश्किल है लेकिन मैं अभी ट्राई भी नहीं करूँगा, रुक जाओ को। दक्ष को चुप करवा देना। दक्ष सबका दुश्मन है, किसी का दोस्त होना हो, दक्ष सबका दुश्मन है यहाँ पे। सब लोग को मुझसे जलन होती है तो मैं क्या करूँ। अकाउंट में काम नहीं करूँगा, ज़्यादा बोलेगा तो। मैंने बोला, बोल दिया अपने अंदर की बात। भाई मेरी दीदी की फोन में 12 जीमेल है भाई। तो बढ़िया बोला। रुक जा, ढूंढता हूँ कौन सा वाला है। SSR का सुन सुन के पक गई। आर्कन क्वेस्ट नेटवर्क की नॉलेज, आर्कन क्वेस्ट नेटलेन की नॉलेज नहीं। जस्टिस फॉर दक्ष, हर HSR हॉर्न का स्टार क्या है, रेल। भाई कोई जीमेल में कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। क्या जीमेल है भाई ऐसा। There are leaves around, and I know just the tune to accompany them. ये If you wish जीमेल to है hear it. तेरा भाई, सीरियसली ये तेरा जीमेल है। ओए केन, आई मजाक थिंक तो ये नहीं कर स्पेलिंग रहा गलत ना? है। बता मेरे को भी बता। डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, डिस्कॉर्ड की लिंक है चैनल डिस्क्रिप्शन में। 2 मिनट को आवाज़ कम कर देता हूँ, गेम अब ज़्यादा कंजट हो रहा है। लेवल है तेरा वैसे वो 3 में। डिस्कॉर्ड की लिंक देखो, एक तो है अपना, कभी कभी नाइट बोट मन करता है तो दे देता है, ड्रॉप कर देता है। चैट में डिस्कॉर्ड लिखो, अपने आप नाइटबॉट लिंक दे देगा। सिर्फ डिस्कॉर्ड लिखो। शायद देता है क्या? हाँ देता है डिस्कॉर्ड, या फिर उसके साथ अगर कुछ और भी जोड़ कर लिखो ना तो भी देता है, मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा ना। तुम छतिया हो, क्योंकि होना पड़ता है। पता क्या तुझे क्या हो गया? अरे नहीं, मैं भाई कैरेक्टर या डिस्कॉर्ड, तो मेरे अल्ट यूज करना भी नहीं पड़ा। डिस्कॉर्ड का लिंक भी कोई और दे रहा है, बॉट ट्रिक्स दे रहा है। बताओ, वो जो बॉट है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता इधर। वाह 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 वाह। अरे यार साला, मेरे को ना चैट भाई का चैट पढ़ना है, ऊपर जाऊं कैसे मैं, लेकिन अब जाके पढ़ूंगा। देखो भाई सीरियसली यार, मैं क्या बोलूं। क्या हो गया, जीमेल देख लिया क्या? जीमेल नहीं यार, इसका अकमल का क्या हो गया? कितना फार्म, कितना घटिया रेलिक्स वगैरह भाई इस बंदे को, मतलब इस गेम के आर्टिफैक्ट्स। देख मैं तेरे को सही बता दूं, मेरा ना होनकाय का, सॉरी होनकाय क्यों बोल रहा हूँ मैं, वदरिंग का कुछ भी नहीं है ना, तो 0 प्रोग्रेस तू लेके चल रहा मेरे अकाउंट में। जज करेगा ना तेरे को गोली मार दूंगा मैं। पैरासीटामोल। जज मैं नहीं वाला, मैं जज करने नहीं वाला, मैं फार्म करने वाला हूँ बस। खुश। ओके सीरियसली भाई, ये क्या मजाक है क्या यार? कैसे बिल्ट है इसके कैरेक्टर। एक मिनट, मेरा एक ईयरफोन कहाँ गया?
ओके मेरे कान में था अभी, कहाँ गया मेरा ईयरफोन? ओ ये रहा, ठीक है सॉरी भाई, ऐसे गिर जाते हैं भाई लोग, फिर मिलते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा नॉलेज किसे पीसी की? किससे पीसी की? देखो अभी पीसी की नॉलेज तो सबको इक्वली है हमारे पास। अकमल को ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास है पीसी, लेकिन बाकी सबको इक्वली है भाई। मेरे को जो नॉलेज है, मैं पीसी बनाते बनाते फिर बजट बाहर हो जाता है। Time to go. मैं ना नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा आज तो, नहीं करूंगा। मेरे को पता है वो फिर से 5 घंटा खींचेगा, तो अभी नहीं। भाई यार क्या बोलूं मैं, क्या अकाउंट है भाई तेरा अकमल कसम से, कितना ग्राइंड। मैं 3-4 दिन जज क्यों कर उसको? मेरे को 1 हफ्ते का तो टाइम दे यार, मेरे को 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का टाइम दे, अभी ठीक करके देता हूँ। मैं नहीं बोल रहा था कि 1 दिन में मेरे को बिल्ड करके दे। मैं 1 दिन में करके भी नहीं दूंगा। 1 दिन बोला मैं, फिर चैट भूल गया। अब कौन सा चैट भूल गया भाई मैं? स्किल इशू है भाई, ये बंदा खुद स्किल इशू चलता फिरता स्किल इशू है ये। अरे 1 सेकंड, चैट भूल गया मत बोलना। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या पता फिर से लॉग नहीं हो रहा होगा। वो होता रहता है, ठीक है। रीजन अच्छा है। जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज पीसी की, उससे बात करवाओ। अकमल है, अकमल से बात करो। एक काम करो, अकमल बात कर। क्या बात करूं भाई मैं? हिंदी बात कर। इसके साथ ये तो वो भी बहुत झाड़ है। मैं चैट नहीं रखता हूं। चैट मतलब डिस्कॉर्ड में जो भी चैट करते हैं। कौन चैट कर रहा है डिस्कॉर्ड में? तो ये बात बताओ। अकमल नाम का एक प्राणी। कोई नहीं है। थैंक यू सर जी, वेरी वेरी थैंक यू। भाई ये पांडा कौन है? नई पांडा है? अकमल कहाँ खो गया? अकमल है, बैठा है डिस्कॉर्ड में। डिस्कॉर्ड में बैठा है। एक काम करो, डिस्कॉर्ड में कर लो, क्या पता रिप्लाई भी दे दे। अकमल बात कर अकमल के साथ। भाई मैं घर पर बैठा हूँ। पुरानी वाली है, हाँ ठीक है। पुरानी वाली है लेकिन डिस्कॉर्ड में नहीं है। नहीं डिस्कॉर्ड में भी तो थी यार वो। चेक कर लो। वाओ नाइट बोर्ड डिस बाहर किसने निकाला मेरे को ये जान। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, मैं उसका नाम पढ़ के पांडा बेबी करके जोक बनाना। हाँ ठीक है। ना शॉर्ट में हरकत किया था ना। क्या हरकत किया था याद नहीं है क्या? उसी ने तो किया था भैया। शॉर्ट बॉय के चलते रहते हैं वैसे। आई डोंट थिंक वैसा कुछ हो। चलो निकलो। और कोई नहीं, थैंक यू। Something with which to commemorate this occasion. उसमें वो नए बनते आए हैं, साइलोन और HP पोटैटो। और उन लोग हमारे कमांडर जो हमारा वो है गिल्ड लीडर, उससे बेटर बॉस बैटल कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठने की टिप 6 बजने वाली। देखो सुबह जल्दी उठने की टिप मैं आपको बताता हूँ। अभी सोने जाओगे तो आपको बस कितना 16 मिनट के अंदर उठ जाना है। आप बहुत जल्दी उठ जाओगे। क्या क्या टिप दिया तू? बहुत अच्छी टिप दिया हुआ है। जल्दी उठने की टिप थी ना। क्या टिप दिया? बोल एक बार टिप वापस बोल। क्या टिप दिया? अभी सोने जाओ, 16 मिनट सोओगे और 6 बजे उठ जाओगे तो वो बहुत जल्दी उठोगे आप। तो जल्दी ही तो हुआ।
देखो वैसे भी लोग कहते हैं कि इंसान को कम ही सोना चाहिए। इंसान को कम सोना चाहिए भाई, उसको सोना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सोकर। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं सोकर? वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, रुक जा भाई सोचने। वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तेरा जीमेल भी भाई, एक तो इतना मस्त जीमेल है ना तेरा, कसम से। अरे उसको उसके लिए बनाया था पता है, एक ना डोमेन वो कर रहा था ट्राई, तो मैं देखा क्या करूँ क्या करूँ, अब सारे जीमेल तो यूज हो चुके थे, तो फ्री एक्सेस के लिए गया। एक तो वेरिक्स करके कुछ ना एक वो था, मेरे को याद नहीं है कोई वेबसाइट, तो उसमें जाके इसी को यूज किया। मैं तुरंत जाके जीमेल बनाया, नाम क्या डालूं जीमेल का, तो देखते हैं सोच लिया भाई, बात खत्म, बन गया जीमेल। भाई ये 78% तो ठीक है, लेकिन जाऊं कहाँ मैं एक्स्ट्रा चेस्ट लेने के लिए? ओके, ये प्लेस अभी तक खुला नहीं है। अकाउंट नॉट रजिस्टर्ड है। अबे नहीं, जीमेल है वो, जीमेल डाल उसको। जीमेल नहीं कर रहा मैं। क्या? रुक जा। गूगल, अरे नहीं, गूगल में ऐड कर, गूगल में ऐड कर। गूगल में ऐड करूं? हाँ। अरे भाई खाए यार, तुम लोग का लगे नौटंकी। अरे देख, गूगल में ऐड कर, उसको लिंक करके हटा देना फिर बाद में। मैं अभी ये भी भूल गया गूगल में कैसे ऐड करते, बता। अभी तेरी साला गिरा दिया। मैं भूल गया भाई, क्या लास्ट टाइम एक दोस्त का किया था सेम ऐसे ही, वो थ्री में ही मैं भूल गया। बता बता जल्दी बता। अच्छा रुक जा मत कर। साले मारे जाओगे एक दिन। कुक नहीं प्लीज, ओपन, थैंक यू। वुवा में एआर कितना होना चाहिए मल्टीप्लेयर के लिए? पता नहीं कितना होना चाहिए भाई। वुवा में क्या होता है? सोलारिस रैंक क्या होता है? 22 है शायद से। अरे यार चैट भाई, तुम एक्सप्लोरेशन करने दो, चैट क्या करें हम। कुछ भी नहीं मिला, वाओ। ठीक है कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अबे साला, हाँ ठीक है रुक जा, कर ले। हाँ कर ही लूंगा, अब लाइव में आया है वो चीज। क्या है नंबर बता, नंबर बता। 99। क्या भाई, बहुत ही खतरनाक। मैं सोचा दूसरे फोन में आएगा, तो दूसरा फोन लेके बैठा हूं मैं, उसमें नहीं आया, आया ही नहीं उसमें। वाओ भगवान, हो गया क्या? 5 years हो गया। ठीक है, अब इतना ग्राफिक्स नहीं सहन हो रहा है फोन को। सिर्फ माविका को निहारने के लिए। देखते हैं, सुनिए क्या? FPS। हाँ वैसे रहेगा तो ओवरक्लॉक में ही। कितना परसेंट हुआ अभी? 79 आई होप, थैंक यू। ठीक है, मेरे को 2 चेस्ट तो दिख रहे हैं यहाँ से।
Let me read you a verse. क्या देखना है? अरे बहुत दिन हो गया, काजुआ मरा नहीं है मेरा। वही क्या बता ना क्या देखना है? मतलब नाम कुछ सूझा नहीं तो देखते हैं। यस। An impressive bounty. बहुत जमाना हो गया उस जीमेल को बनाया, पता है? ओके जाना कहाँ है मेरे को? अरे लड़का है रे वो भाई। An impressive bounty. An impressive bounty. एक रजन तो बन ही गया होगा अब तक। अच्छा अभी भी बचा है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है मतलब। अच्छा Come on, show me your courage. That was quick. ओए कमल, ये तू अभी HSR वापस कभी खोलेगा? कल अभी भी खोल सकता हूँ। Something with which to commemorate this occasion. ओए क्या बोल रहा था मैं? केन? हाँ कौन से सर्वर में तू बनाया था अकाउंट? SEA मतलब साउथ ईस्ट एशिया में देख। और मेरा जो गेम लैग होता है ना साउथ ईस्ट एशिया में, अभी खोलने को हाँ क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहा था। कल खोलेगा ना अगर अपना अकाउंट तो एक बार मैसेज कर दियो मेरे को टैग करके, ताकि मैं तभी उस टाइम पे नहीं खोलूं तेरा अकाउंट फार्म करने के लिए। हाँ एटी हो गया, ये सेटी हो गया। प्रॉब्ली अगर मेरा मन करा तो मैं वो स्टोरी के लिए करूंगा बाद में। अब बस ये बचा है 80 करना, तो 60 21% मैं कभी भी कर सकता है, मैं रात को ही करूंगा। तो रात में तो मैं बोलता हूँ अभी तू सुन मैं बोलता हूँ अभी थोड़े दिन मत खोल, मेरे को फार्म वगैरह करने दे, फिर जाके तू अच्छे बिल्ड कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी कर ले। अच्छा चल हो गया, मैं बंद करता हूँ। बंद कर रहे हो लाइक? हाँ एक गुड बाय लिख देता हूँ। बड़ा जल्दी याद है सुबह के 6 बजे लाइव बंद करना। हाँ घर में सब उठ भी गए, बताओ आज पता नहीं चमत्कार हो गया। अभी 2 घंटे में मेरे इधर भी उठेंगे, मुझे भी 2-3 घंटे में उठना है। फिर तेरे 2 घंटे में उठेंगे, फिर तुम भी उठ गई होगी। भाई तू किधर लॉग आउट किया था? बाय बाय गुड मॉर्निंग, मैं वही लिख रहा था गुड मॉर्निंग वाला भी। है केन? हाँ साला यिनलिन क्वेस्ट में लॉग आउट क्यों किया? क्या बोला तू? यिनलिन की स्टोरी क्वेस्ट में क्यों लॉग आउट किया? मैं नहीं पता मैं क्या किया हूँ, मेरे को इतना पता है मैं कुछ तो फॉलो अप कर रहा था। अच्छा हाँ नहीं स्टोरी कर रहा था मैं।
लेकिन वही है ना, वो स्टोरी खेलते खेलते मेरे को पता चला कि मेरे फोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है बद्रीमेश, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अब बंद करना पड़ा मेरे को उसको, मैं तब से कर भी नहीं पा रहा हूँ उसको। ये लोड आउट ऐसा क्यों है भाई? मतलब क्या कस्टम हाँ ठीक है, चेंज कर ले, चेंज कर ले। वो दूसरा फोन है ना, दूसरे फोन में उतना साइज नहीं है तो उसमें करना पड़ता है वो सब। स्पेसिफिकेशंस है बाय द वे, लेकिन साइज नहीं उतना बड़ा। तो बाद में लगा लिया जैसे थे। मेरे को ये चीज नहीं पता थी, मैंने तेरा अकाउंट लॉगिन किया तो तेरा ही कस्टम एचयूडी मुझे भी आया। वाह। हाँ तो ऐसा ही तो काम करता है क्या क्लाउड शेयरिंग? पता नहीं था ना मुझे। कर सकते हैं भाई। बाद में देखेंगे। ये देखो बर्स्ट। ठीक है, ये नहीं करना था बस। अरे चेस्ट अरे इसकी ऐसी की तैसी। भाई क्या मतलब हुआ इसको मारने का? चेस्ट ही नहीं दे रही है। रहा है यार जो भी। 5 स्टार कौन से बात है? दर्द हो रहा है, दुख रहा है। तेरे पे एक भी लिमिटेड 5 स्टार नहीं, तो जिंची तक पुल नहीं किया भाई। कैसा बंदा है तू? अबे मेरे फोन में चला ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब क्या बोलूं बदरिंग, क्या बोलूं मैं भी। वो तो उतना कैसे पहुंचा मेरे को नहीं पता। स्टोरी उतना चल भी गया। ऐसा है हर आधे घंटे में ना फोन क्रैश हो जाता है उसके कारण गेम, इसीलिए। और वो तो अभी इस अपडेट के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। अकाउंट ले लियो भाई। क्या क्या क्या? मेरा वोवा अकाउंट ले लियो। कितना यूनियन लेवल है तेरा? 8। सर मतलब जब वोवा रिलीज हुआ तो बाद में जब स्टोरी कर लूंगा ना तब फिर दूंगा मैं। सुन ले जब मैं क्या नॉर्मली अपना जो गेंशिन अकाउंट से आता हूँ ना अपने दोस्त के, उसी दोस्त ने मतलब वोवा का जब ये अकाउंट बनाया था जब रिलीज हुआ, उसके फोन में भी नहीं चल रहा था ना, कि उसके लैपटॉप में गेम डाउनलोड ही नहीं हो रहा, मतलब लोड ही नहीं हो रहा था। और उसके फोन में चालू हो रहा था तो लोडिंग स्क्रीन पर ही गेम क्रैश हो जा रहा था। तो उसने मेरे को अकाउंट दिया, बोला कि मैं फार्म करूं। तो साला उसके अकाउंट में मैं 30 यूनियन लेवल तक पहुंचाया, मेरा तभी 10 पे पड़ा है। मैं उसका 30 किया, वो बंदा अभी मेरे में फार्म नहीं कर रहा। उसको मैं रोज बोलता कि मेरा गेम लैग मारता है, तू कर ले भाई मेरे में फार्म। वो उसको टाइम ही नहीं मिलता। ओए तो सुनिया वे। अरे फ्री वेपन आई है। What the f... हाँ बोल दे, क्या बोल रहा है? बोल दे सुनना चाहता हूँ मैं। क्या हुआ? मैं तेरे अकाउंट में अभी एक 10 पुल मिला था। हाँ। मैं वो 10 पुल किया, 4 4 स्टार मिले, 3 वो ताउची मिली है, 3 कपाल वाली जो लड़की है, 3। ओके। और एक एनर्जी रिट्रेस वेपन मिला है जो कि लिटरली मतलब शोरकीपर के लिए बेस्ट 4 स्टार वेपन है। हाँ तो तेरे को शोरकीपर मिलने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। तू निकाल बस देना, बात खत्म। स्ट्रीम लिंक हो भी गया डाउनलोड। मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा कैन, बट मैं ट्राई करता। ओके 23 का है पेटीएम। एक चीज है कैन, वैसे इसका जो शोरकीपर का बॉस है ना, उसके लिए तेरे को मतलब पूरा लास्ट का मेन स्टोरी कंप्लीट करना पड़ेगा। अबे मैं कर तो दूं लेकिन नहीं चलता बे, नहीं चलता। वो ऑप्टिमाइज क्या किए, मेरे में नहीं चलता बिल्कुल भी। कॉन्फ़िग भी ढूंढ लिया, नहीं मिलता। मतलब सुन एक चीज बताऊं मैं तुझे, जब गेम रिलीज हुआ था ना, हाँ। तब मेरे इंटरनेट से मतलब मेरे को गेम में 500 MS आते थे। मतलब अभी नहीं देख, MS मेरे को पता है, शुरू में सर्वर का बहुत प्रॉब्लम था उस बदरिंग में उसमें। हाँ वो है।
लेकिन मेरा सर्वर वाला प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गेम क्रैश हो जाता है और सर्वर गेम क्रैश नहीं कराता, बफर कराता है। अच्छा चलो, क्या बंद कर।